Megha, Saurabh, Shantanu, Priyank, good morning. Ram Sarveshwar, good morning. Nice to see you all. So how's geomorphology going? कुछ पढ़ा? कल NCERT से हमने देखा था कुछ processes and something going on from GC Leong. So somebody submitted the answer. कुछ तो किसी ने अपना diagrams बना के भेजे थे. Why are we here? Target 300 plus. Get that? कैसे आएगा 300 plus? By writing amazing answers. Amazing answers कैसे आएंगे? By writing right answers. Right answers will have what? By getting to know the context plus content. For that, what will we have to do? We'll have to have concept clarity plus adequate content, data, diagram. For that, what do we need? We need books and teachers. What do we need? Self-study. So कहाँ पे चल रहे हैं अभी हम? We are at this. So self-study किया कि नहीं? अभी तो यहाँ पर. Journey is like this. Yes or no? And fools start from here. They think पहले देनी amazing answer. क्यों? क्योंकि मेरे तो खून में amazing answer है. True? Yes or no? So that is what we are talking about. बंदना जो नहीं आया वो बताइए ना. आपको बोला कि वहां से जो आपने पढ़ा उसको लीजिए स्नैपशॉट. क्या समझ नहीं आ रहा ये तो बताइए. अभी भी ये है कि सर मौसम ये शुरू हुआ, मौसम वो शुरू हुआ. बता दिया कैसे डाउट पूछना है. अब देखिए कितने लोगों ने काम किया मुझे तो नहीं पता है. देयर आर सम पीपल जो कि ये कर रहे हैं. अलग अलग रैपिड्स हैं और ये है. ठीक है. क्वेश्चन आता है एग्जामिन द. क्वेश्चन इज एग्जामिन द कंट्रोल ऑफ स्ट्रक्चर ऑन लैंडफॉर्म्स. एग्जामिन द कंट्रोल ऑफ स्ट्रक्चर ऑन लैंडफॉर्म्स. यस और नो. किस तरह से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर लैंडफॉर्म्स को कंट्रोल करती है उसमें ये डायग्राम जाएगा. व्हेन देयर इज अ हार्ड रॉक, रिमेंबर हार्ड रॉक डज नॉट गेट इरोडेड, सॉफ्ट रॉक्स गेट इरोडेड, सो द रिवर फॉल्स एंड फॉर्म्स वाटरफॉल. अच्छा एग्जांपल है, अच्छा डायग्राम. चलो अभी तो हमें गॉड्स ऑफ कैनियन का मतलब नहीं समझ में आ रहा. ये सुनो तो भाई कहां से पढ़ दो लिख दो ना. अभी भी बच्चा ही बना रहना है तो भाई बड़ा मुश्किल है. ये सुनो सर मुझे नहीं समझ में आया अर्थ स्फेरिकल क्यों है. आपने कहीं पढ़ा उसको ढूंढा ना तो वो लिखिए ना. क्या क्या उसने बताया होगा ना अर्थ स्फेरिकल क्यों है. तो वो भी नहीं होता है तो प्रॉब्लम है. सो राम ने कुछ डाला है, राम ने कुछ डाला है. क्या डाला है ये देख लें. देखते हैं क्या है. तो एवरीवन ये बता दिया आपको कैसे यूज होगा. ये जिसने भी डाला था, ये डाला था, किसने डाला था? सौरभ. सौरभ समझ में आ गया. सो थ्रू सौरभ एवरीवन डू वी अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस डायग्राम बुक इज गोइंग टू हेल्प यू. हाउ दिस डायग्राम बुक इज गोइंग टू हेल्प यू एंड यू विल गेट सच क्वेश्चंस. और आपने प्रैक्टिस किया होगा तो जल्दी से बन जाएगा. दैट इज वन थिंग. और यहीं पर आप देखेंगे ये इन्होंने मेरे ख्याल से एक्सपेंड नहीं करेंगे. रैपिड्स कैसे बनते हैं. ये वर्टिकल रॉक है, ये हॉरिजॉन्टल रॉक है, वर्टिकल रॉक. सो गुड वर्क सौरभ. अब नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या किया है. फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स इरोजन से वी शेप वैली गॉर्ज कैनियन बनता है, ये बनता है. तो ये बेकार काम है, ये टाइम वेस्ट काम है जिसने भी किया. हमने कहा डायग्राम बनाने, इन्होंने लिस्ट बना दी. लिस्ट किलो के हिसाब से मिल रही है. वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है. ये लिस्ट बनाकर समय व्यर्थ ना करें, प्रॉपर डायग्राम्स बनाएं. डायग्राम बुक इज अबाउट दैट, नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग दैट. तो एक आपको सैंपल मिल चुका है सभी लोगों को. सौरभ का सैंपल था. ये सैंपल किसका है? ये खुशी का सैंपल है. खुशी का भी सैंपल देख लेते हैं. खुशी ने भी लगभग वहीं का सैंपल लिया. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का कंट्रोल दिखाई दे रहा है. बिकॉज़ आई वाज टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर यस्टरडे. तो स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल अच्छा. वाटरफॉल कैसे बनता है और ये कैसे बनता है. खुशी के केस में आई वांट टू गिव अ फीडबैक. खुशी डायग्राम बुक है, डायग्राम बुक. कट द डिटेल्स एवरीवन. पता है क्या हो जाएगा आपका. ये बुक इतनी थिक हो जाएगी किसी काम की नहीं रहेगी. तो खुशी राम वाला काम तो नहीं करना है. जो इन्होंने किया ये ठीक है. सौरभ वाला काम करेंगे. आई वुड वांट एवरीवन टू सी अ पेज, टेक अ थीम, say for example control of structure, 4 diagrams or 5 diagrams in that. Make your diagrams well illustrated. सब कुछ उसमें लिखा होना चाहिए. Illustrated means well labeled. Remember labeling in the schools. वो वाला काम करिए. अगर ये thesis लिखने लगेंगे टाइम वेस्ट होगा. कुछ मजा तो बहुत आएगा, तसल्ली भी होगी. और GS will be compromised. I don't want any students GS to be compromised. Get that? So खुशी good work but needs to be looked into. ठीक है. पूर्वी आपका काम मैंने देख लिया. ठीक है. यहाँ पे अब सब अपलोड नहीं कर रहा हूँ. राम आपका काम मैंने बता दिया. नॉट अप टू द मार्क है. इट इज नॉट अप टू द मार्क. चलिए संचारी का काम देखते हैं. संचारी का भी ये वाला काम भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ. नॉट अप टू द मार्क. एक और चीज दिखा रहा हूँ. एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट दिस. आई नो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क तो ऐसा होगा. इतना बड़ा लिखा है और यहाँ पर कुछ खास बना ही नहीं है. और ये तो टेरेस भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है. दिस लुक्स मोर लाइक फ्लड प्लेन.
तो ये अच्छा डायग्राम नहीं है। डू नॉट राइट थ्योरी नेक्स्ट टू इट, डायग्राम बुक इज नॉट फॉर दैट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, बी स्मार्ट। ये तो बुक से ले रहे हो ना जीसी लियोंग से, अच्छे डायग्राम बनाओ। ये टेरेस नहीं बन रहा है, ये तो फ्लड प्लेन पता नहीं क्या बन रहा है, सो नॉट अ गुड डायग्राम, ये दैट। तो ये हो गया आपका, और किसका है, राम का मैंने देख लिया, और किसका है, कल्पना ने डाला है, कल्पना का देख लेते हैं लास्ट। ठीक है, सो एवरीवन लास्ट वन व्हिच आई एम शोइंग टू ऑल ऑफ यू, और इसके बाद मैं पिक नहीं कर रहा हूँ, कल्पना ने भेजा है। सो लेट्स हैव अ लुक। कल्पना ने स्ट्रीम्स क्या लिखा है, इन सीक्वेंस स्ट्रीम, ऑफ सीक्वेंस स्ट्रीम, डेंड्राइटिक लाइक पैटर्न्स, फिर उसके बाद इन्होंने ड्रेनेज पैटर्न लिखा है, फिर रिवर के स्टेजेस लिख दिए हैं, दिस इज द अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स। ठीक है, ये वर्टिकल सेक्शन इन्होंने लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक लग रहा है कल्पना। ओनली प्रॉब्लम इज इसमें तो कोई भी लैंडफॉर्म बना ही नहीं है, नो लैंडफॉर्म इन दिस। द आंसर वाज फॉर लैंडफॉर्म। ये स्टेजेस वाले तो बहुत से लोग बना रहे हैं, इज अ वेरी सिंपल थिंग, यहाँ पे लिखने से नहीं होगा, ये बने नहीं है, सो दे आर ऑफ नो यूज। और यहाँ तो आप जो दिखा रहे हैं इसमें तो कोई लैंडफॉर्म है नहीं, सभी लोग ये दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ वर्टिकल कोरिजन हो रहा है, यहाँ वैली वाइडनिंग हो रही है, और ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, सो नॉट अ गुड चॉइस। तो डायग्राम बनाए सिंपल। मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था, फ्लूवियल, थर्सडे और फ्राइडे को फ्लूवियल था ना। So ending this, it has been 10 minutes. Thank you for submitting. Good. You got your feedback. So please do not take this as a good thing or a bad thing. This is just a start. Is everyone okay? तो जिन लोगों ने किया congratulations, जो लोग वेट कर रहे हैं कि ये सब मुझे बना बनाया मिल जाएगा, कुछ नहीं उखाड़ सकते उसके बाद। तो ये बन गया, ये बना बनाया दे भी दिया, यहीं पे डाउनलोड कर लेना। Nothing can be done अगर आप नहीं बना सकते तो। ठीक है, there we have to draw quickly. So no more submissions, please stop sending whatever you're sending. हो गया, अब भेजना बंद कर दें। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद क्या है, ओके, यस सर, बॉटम अप अप्रोच सर ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, लैपटॉप से सेंड नहीं हो रहा है। ओके, नहीं अभी कोई वो कुछ सेंड नहीं कर रहे हैं, हम कोई ग्रुप पे कुछ देखने नहीं जा रहे हैं। हमने कहा था जिन लोगों ने भेजना था वो तो मुझे वैसे भी मैसेज में कल रात को भेज चुके थे। सम माइनर डिटेल्स अबाउट द डायग्राम, लेबल योर डायग्राम वेल, लेबल योर डायग्राम वेल। Mubasir is saying this is my first class. So Mubasir, this course has started with the course orientation and blueprint. उसको जरूर देखें, please have a look at the course orientation and blueprint. That will tell you what this course is about, what are we doing, what are the relevant sources, किन बुक से पढ़ना है, क्या नहीं करना है. So that is what is to be done. Is everyone okay with this? चलिए, what are we going to talk about? जल्दी से बना दीजिए. Quickly your test begins. Shubham, Mubasir, okay, both of you have just come in. So my classes are pretty interactive. There are specific tasks given and specific homeworks given that is to be done. That is why I'm saying आप आ गए हैं, क्लास को आप देख लीजिए. But after the class, please go to the first session. First session is called the course orientation and blueprint of this course. मेरे course page पे जाइए and do that. Okay, that. Otherwise, this is window shopping. बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, उस टीचर से भी पढ़ लिए, इससे भी पढ़ लिए, और सबसे पढ़ लिए. एग्जाम में कुछ नहीं आता, तो वी आर वेरी वेरी सीरियस कि हमें एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा है. आई होप द मैसेज इज क्लियर. बाकी लोग एंजॉय करें क्लास को. क्वेश्चन जिन लोगों ने कल किया था, जल्दी से वी विल बी ड्राइंग व्हाट, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जीटीएस बनाएंगे जल्दी से. सो शुभम मुबशिर, यू कैन प्लीज वॉच. अभी कोई दिक्कत नहीं है, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. यू आर बिगनर्स, एकदम से पहली क्लास में आप, नो प्रॉब्लम. जियोलॉजिकल टाइम स्केल जितना कल किया था, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2 minutes. नो लुकिंग इन द बुक. quickly, people who are new, you can join in the channel. Okay. Okay, so geological time scale, everything started with 4.6 billion years ago. Okay, so we did 4.6 to 2.5, or say 3.8, 3.8 to 3.8 to 2.5, 2.5 to 2.5 to 543, 543 to present. Hardian, Archean, Proterozoic. ये क्या है? This is the eon. The largest unit is eon. And till present, what do we have? Phanerozoic. Phanerozoic. Eon is broken down into eras. Phanerozoic 543 की हम बात करते हैं. This is called Precambrian. Is everyone okay with this? Precambrian. Then we are looking at Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic. Paleo को हमने कर दिया था 245, Meso को कर दिया था हमने 65. Cos, DCP, Triassic, Jurassic, Cretaceous. Tertiary,
एंड क्वार्टरनरी। इज एवरीवन ओके विद दैट? सो एराज भी हो गए थे। एराज को हमने किसमें ब्रेक किया? एराज इज ब्रोकन इनटू इपोज। इपोज है, पीरियड्स है, पीरियड्स। सो इयन डन, era done, period done, and periods are broken into epochs. So everyone यहाँ पर खत्म कर दिया। Which one as a geographer are we interested in? हम किसमें interested है? We are interested in which ones? Geography इस सब में डील ही नहीं कर रही, तो ये तो हटा दिया। We are interested only in Phanerozoic. Paleozoic में भी कौन सा वाला? Carboniferous। Carboniferous में what happened? Coal happened. Triassic, Jurassic ये सब क्या है? डायनासोर्स का एज ऑफ डायनासोर है। 65 में हिमालय बनना शुरू होता है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ एवरीवन, टर्शरी और क्वार्टरनरी के लिए आपको मैं इपोज दे रहा हूँ, PEOMPPH। क्या दे दिया मैंने? इपोज दे दिया। किसके? सीनोजोइक के। ठीक है, सीनोजोइक के मैंने इपोज भी दे दिए, टर्शरी क्वार्टरनरी। ठीक है, व्हाट इज PEOMPH? पेलियोसीन। पेलियोसीन कौन सा है? सीनोजोइक है ना एवरीवन? सो एवरीथिंग विल बी सीन हियर, पेलियोसीन। उसके बाद इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन। इज एवरीवन ओके? एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज़ कल एक क्वेश्चन आ गया था, प्लीस्टोसीन आइस एज के बारे में बताइए। जियोमॉर्फोलॉजी वी हैड अ क्वेश्चन अबाउट प्लीस्टोसीन आइस एज और हमें पता ही नहीं प्लीस्टोसीन क्या है। डू वी गेट दैट? इपोज में है। एंड द लेटेस्ट इपो दैट हैज बीन एडेड, इज एंथ्रोपोसीन। आज हम किसमें रह रहे हैं? एंथ्रोपोसीन। समझ में आ गया सब लोग? जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, कहां पे था ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी कहां पर है? इस चित्र में बनी हुई है, मैंने जो आपको दिया था। पीपल हु कम न्यू, डोंट वरी, ये सब कल इनको याद करने का मौका दिया गया था। देयर वर टेक्निक्स फॉर देम टू रिमेंबर। सीनोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजोइक। सीनोजोइक में टर्शरी, क्वार्टरनरी, और ये क्या आ गया? PEOMPPH। और हमने यहां पे कट लिया 2 मिलियन ईयर्स अगो, और यहां पर ह्यूमंस आते हैं। प्लीस्टोसीन इज आइस एज, हेलोसीन इज वाटर एज, और अभी कौन सा चल रहा है लेटेस्ट? इपो, जो अभी यहां पर नहीं डाला है, एंथ्रोपोसीन। यू एंड आई आर लिविंग इन एंथ्रोपोसीन। एवरीवन ओके? सारी जानकारी जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लिए चाहिए थी वो इस डायग्राम में थी। एंड द शीट वाज अपलोडेड, सबको मिल गई थी टाइम से शीट? डिड यू गेट द शीट्स आल्सो इन टाइम एवरीवन? दैट इज गुड इफ यू गॉट योर शीट्स इन टाइम। सो दैट वाज माय इंटेंशन। सो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इजी था या डिफिकल्ट था? कैन वी यूज द वर्ड प्लीस्टोसीन इजीली? प्लीस्टोसीन, यस। कैन आई से वो जो आपको पता है इंडिया में बसाल्टिक लावा है, बसाल्ट, यस, द ब्लैक सॉइल रीजन, बसाल्टिक लावा, उसको कहते हैं क्रिटेशियस। क्रिटेशियस लावा। समझ में आ गया क्रिटेशियस कहां पर आने वाला है? ये वाला यहां कहीं पर आया वो, क्रिटेशियस टाइम में आया, क्रिटेशियस पीरियड का लावा है, तो ऐसे यूज हो जाएगा। ठीक है, क्रिटेशियस सीटी, हाँ बिल्कुल मेसोजोइक लिख सकते हो, यू कैन कॉल इट मेसोजोइक। और ओल्ड वंस को हम क्या कहते थे? सबको कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रीकैम्ब्रियन। 87% ऑफ द जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज प्रीकैम्ब्रियन। लाइफ इजी है, पुराने वाले में टेंशन नहीं ले रहे हम। 87% is Precambrian. When we are here in the Paleozoic, we are more interested in which one? Carboniferous. ठीक है, Carboniferous का कॉस्ट DCP, ये रहा Carboniferous, मिसिसिपी एंड पेंसिल्वेनियन। आपको वो नाम ही नहीं याद करने। Is everyone okay? हिमालय कब बनने शुरू होते हैं? क्रिटेशियस से शुरू हो जाता है। एक्चुअली कहां पर आता है? मायोसीन में आता है। हिमालय का जो हो रहा है मेन चीज 30 मिलियन ईयर्स अगो, ओलिगोसीन, मायोसीन। So many things are going to come. I just wanted you to remember this very very easy thing. I hope it was easy and interactive. आपको समझ में भी आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। इसके बाद भी कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो एरियाज थे, हार्डियन क्या होता है, आर्कियन क्या होता है, प्रोटेरोजोइक, वेंडियन, पेलियोजोइक, इज एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट? कार्बोनिफेरस में कार्बन है, मेसोजोइक, सेनोजोइक, तो ये मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया था। आई होप यू आर डन विद दैट एंड नाउ आई वांट यू टू रिमेंबर दिस। ये जो मैंने आपको बताया, क्या बताया? सीनोजोइक। सीनोजोइक इज ब्रोकन इनटू, सीनोजोइक पीरियड इज ब्रोकन इनटू कितने इपोज? Tertiary and quaternary. Tertiary and quaternary are broken into PEOMPPH. So एक और memorization का काम है. I hope you will do that. So 10 minutes इसमें भी लगे. 10 minutes were for the feedback to your homework. 10 minutes for this, and 2 minutes for a story. 2 minutes for a story. चलो 3 minutes for a story. Have you heard of Mao Zedong? चाइना में जो कम्युनिस्ट क्रांति हुई. So Mao was a boy, young boy. Yes, he loved his mother. He loved his mother, and he learned a lot from his mother. Get that? And as he was growing with his mother, she was teaching so many things. She was very fond of gardening. She had one of the best gardens in the town. But well, she contracted some disease and she was ill. The illness prolonged. लंबे समय तक बीमार हो गई. And she became so weak that she was not able to tend her garden. So she was very sad. The garden was not taken care of. Yes or no? So if that happens in your home, will you help your mama or not? So Mao said, "Mama, why are you sad? I'll take care of the garden. No problem." She said, "Will you?" He said, "I will." She said, "Will you take care like me?" उसने कहा, बिल्कुल, जैसे आप प्यार से रखते हो बिल्कुल वैसे ही
I will keep this garden just the way you do, utne hi pyar se, with all that love and compassion. So the mother said, okay, thank you, I am so relieved. And then the mother was in her illness. She stayed in her illness, and a month or so after that, when she was improving, she stood up, but she was assured Mao is taking care of, and she looked out to look at the garden, and she was amazed. The garden was totally wilted and destroyed. सबका सब मुरझा गया था. Every plant, every leaf, every shrub, सब destroyed. She called out for Mao. She shouted at Mao, Mao, how is this? कैसे कर दिया यार ये? I trusted you. You should have said no. I could have delegated it to someone else. I thought I'm delegating it to my son. बेटे को दे रही हूँ तो इसमें तो कोई problem नहीं. Yes, sir. Mao was listening to the scolding and tears rolling down his eyes, and he was feeling very bad, very sad. And crying and choked, he told his mama that, Mama, I took all care of these plants. I treated them as my own plants. I talked to them. I kissed them. I hugged them. I even used a very clean cloth to clean every leaf every day. Everything I did to them. I even washed them with a wet cloth. But I don't know. Every day they just wilted. Probably they did not like me. Mama said, why didn't you water the plants? He said, I did. With that wet paper and wet cloth, no, I would clean them. So you're not supposed to clean them. You're supposed to give them water. He said, no, I treated them with all love and affection. I told them stories. I laughed with them and everything. And the water was there on the cloth. She said, no, water is not there on the cloth. Water has to go where? To the root of the plant. You're applying water on the leaf, on the flower, it won't help. Yes or no? She said, you didn't have to do anything. You just had to water the plant. So all of us want to learn a fancy introduction. The teacher gives out the introduction. Conclusion. The best case study. You have a collection of case studies. Yes or no? You have a collection of data, fact, freak ideas. पढ़ते ही examiner कुर्सी से हिल जाएगा. You've done a PhD in that subject. We don't have water for that. You never thought of G.C. Leong. You never thought of NCERT. सर मेरे लिए तो सर क्या पढ़ते हैं आप सर आप कौन सी बुक पढ़ते हैं? तो मैं तो बहुत हाई लेवल बुक्स पढ़ता हूँ सर. मुझे वो टॉप बुक्स दीजिए. लुटजेन एंड टारबुक सर मैं वही पढ़ना चाहता हूँ जो आप पढ़ रहे हो. सर मैं थॉर्नबेरी पढ़ना चाहता हूँ. सर मुझे एक टीचर ने बताया सिर्फ उसे ही पता है बुक और किसी को पता ही नहीं है. तो सम टीचर्स तो से मेरे पास ये बुक है. रिमेंबर दिस डे इंटरनेट एज these teachers are talking about like 50 years old. मेरे को ही पता था बुक, बाकी तो पता ही नहीं था. And I want to tell you, these people have done geography through open schooling. They never even went to the university. और बकवास कर रहा है कि मेरे को ही किताब पता थी पूरे देश में और किसी को किताब ही नहीं पता थी. Shame on them. Shame on them. You tell me, your teacher, mechanical engineer teacher, chemistry teacher, physics teacher, literature teacher, उसने जो भी पढ़ाया, did he tell you the book he is reading from? Now this teacher comes to Delhi and he says, किसी को पता ही नहीं था, मेरे को थॉर्नबेरी पता थी. मैं तो तभी से नोट्स बना रहा था. तभी चाचा वही नोट्स आज भी चिप रहा है बच्चों को. तुम तो हो ना पाए, उनको और चिपका रहे. चिपकाओ भाई. So what I'm trying to say here is, are these important? Yes, they are important. But everything will grow out of True or not? You haven't read anything about a river, and I come and give you a concept from Lutjen and Tarbuk. मैं आपको क्रचफील्ड पढ़ा रहा हूँ. Yes or no? और कह रहा हूँ किसी और को पता नहीं है, मुझे पता है बुक्स. Which age are you living भाई? कौन दुनिया में रह रहे हो? You're living in internet. अभी तो तुमने वो साइट्स खोली नहीं है जिन साइट्स पे मैं देख रहा हूँ आजकल. But then claims are claims, no. आजकल जो जितना बड़ा बोलेगा वो ज्यादा अच्छा है. So one lesson from Mao. The story, I don't want to extend it. Please water the roots. You will find people showing you fancy flowers. You will find the topper saying, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, ऐसे देखा और मैंने आंसर ऐसे कर दिया. In reality, the topper was equally tense. किस्मत थी. अभी भी एकेडमी में मिलते हैं ना तो बहुत से लोग कहते हैं भैया पास हो गए, बहुत बड़ी राहत. True or not? Yes or no? And you tell me, how fair have been the exams in your life? Haven't you seen many deserving people not getting the results? Haven't you seen that? So just by the exam success, can we declare you as a successful person or as a fool? No, we cannot. है ना? तो कुछ लोग कैसे एग्जाम पास कर गए, आप उनका टॉपर का सुन रहे हो, कुछ भी फंडा दे रहा है यार. 4-5 बार में सुन के आपको पता चल जाता है कौन टॉपर सिर्फ पीआर बढ़ा रहा है और कौन सच में हेल्प कर रहा है. कैन यू फाइंड आउट और नॉट? ट्रू. सो व्हेन द टीचर्स गिव यू दिस ट्रैप कि मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ आजकल, क्यों बताने की जरूरत है? यू टेल मी, इन योर कॉलेज हैज एनी टीचर एवर टोल्ड यू कि आजकल बच्चों मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ तुम्हारे लिए? कौन करेगा यार? कोई टेंशन है भाई? किसी ने बोला कि आपको कुछ नहीं आता, आप नालायक हो, क्यों इज्जत को लुटवा रहे हो यार? So people with insecurities will tell you this. I'm saying I believe in this, that I will be talking about all these things. Can I expect you to do this? Do you agree that geological time scale is a part of that route? काम तो geology का है, but हमने कर लिया. Does it make sense or not? Now we have the vocabulary. So that is why we are doing that. Is everyone okay? तो इसलिए कह रहा हूँ इन सारी चीजों को water और पानी देने में do you give water by the dropper? प्लांट को ड्रॉपर से पानी देते हो? कैसे देते हो? नहीं सर, ऐसे पानी को बकेट से दे देंगे. Yes or no? But in certain cases, do we have something called as precision farming also?
precision farming also, where we decide the amount. So that's a different case. Special case में होता है ये सब. So that's what I'm saying. अभी don't be miser. This is your second class. पिछला क्लास में तो जस्ट बताया ना geomorphology का syllabus को introduce किया. This is your second class. Please, what are your roots? Get that? So your doubts taken. Second, a test taken. Third, a story given. Half an hour gone. Oh my God, time travels very fast. करेंगे क्या आज? आज करेंगे landforms. But landforms से आने से पहले ये शुरू करना पड़ेगा. Remember, first we go to the roots of it. Earth तो बनाओ. We need to make the earth. So how was earth formed? How was earth formed? जल्दी से बताइए. So when was this done? जल्दी बताओ. ये मैंने कब कराया आप लोगों को? सर ये तो आपने फाउंडेशन में करा दिया. सर ये तो बिल्कुल सही प्रोसेस है. Remember there is something called as planetary accretion. Accretion. Remember? So पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि if you look at Savinder Singh, बुक है ना Savinder Singh, physical geography. तो अभी भी there are people on the Telegram group who are saying फोटो भेज दो भाई, कौन सी Savinder Singh लेनी है? तो फोटो का क्या करेगा? फोटो का क्या करेगा? Yes or no? So tell me one thing. India Yearbook. India Yearbook is published by Publication Division of India. Yes or no? So you come to prepare for civil services. किसने कहा India Yearbook पढ़नी है? तो will you say भाई फोटो भेज दो? भाई फोटो भेज दो, बहुत सारी India Yearbook है. अरे सुनना, India Yearbook 2022 ले ले. फोटो से क्या करेगा? Every year will they change the cover photo or not? Take the latest. So whichever is the latest edition, if you are getting on Amazon, if you are looking at Savinder Singh and there are 3 Savinder Singh paperback, तो उसका एडिशन बताएगा ना, जो लेटेस्ट वो ले लेना है. आधे लोग इसी टेंशन में. उस दिन किसी ने कहा सर खुल्लर का नया एडिशन आने वाला है. अरे अभी खुल्लर साहब का जो एडिशन है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम एंड हिज एज, ले लो यार. दैट्स इट. चिंता नहीं करो, बहुत चेंज नहीं होगा. सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग. सविंदर सिंह ने कुछ थ्योरीज दी. थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. अर्थ कैसे बना, कुछ थ्योरीज दी हैं और बताया कौन से साइंटिस्ट हैं. आई होप यू आर जॉटिंग डाउन थिंग्स आल्सो. सो एक उन्होंने कहा प्लैनेटेसिमल थ्योरी. प्लैनेटेसिमल थ्योरी 1905 में दो जियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर कॉम्बिनेशन, चेम्बरलेन. ठीक है. तो इन्होंने कहा कि स्पेस हैज गॉट अ लॉट ऑफ स्मॉल लिटिल पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स. प्लैनेटेसिमल्स आर द टाइनी फ्रैगमेंट्स फ्रॉम व्हिच प्लैनेट्स आर क्रिएटेड. सो प्लैनेट्स के लिए प्लैनेटेसिमल होते हैं, स्टार्स के लिए कुछ और होते हैं, सब कुछ होते हैं. तो ये इन्होंने कहा वहां पर ये है और ये सब आपस में चिपक जाते हैं, इसलिए बनता है. सही गलत पता नहीं, दिस इज प्री साइंटिफिक एंड Savinder Singh will explain this with a full para. All you need to do for the examination, know just the name. Is everyone okay? So कोई डिटेलिंग कुछ करने की जरूरत नहीं. These are pre scientific ideas. They are invalid. They are invalid. See that? Now everyone please pay attention. So this is the sun. This is the sun. This is Mercury. This is Venus. This is Earth. This is Mars. And this is Jupiter. This is Saturn. Yes, sir. So it seems that they are bigger in the center. Yes, no? तो ये कैसी शेप है? सिगार शेप. अब प्रॉब्लम ये है, इंडिया वाले बहुत सिगार विगार पीते नहीं, तो सिगार उनकी समझ में नहीं आता. उनको तो सिगार ऐसे ही दिखाई देता है कि सर सिगार तो ऐसा ही होता है. ठीक है, तो उसे कट करने के बाद वैसा हो जाता है. सिगार की जनरली टिप्स होती हैं. सो दैट इज व्हाट इज टू बी कट. सो आपको इस शेप को क्या बता रहे हैं हम, ये क्या लग रही है शेप, सिगार शेप. अब ये एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन करना प्री साइंटिफिक. तो उन्होंने क्या कहा, एक थ्योरी है, एक सेट ऑफ थ्योरी है जिसको हम कहते हैं बाइनरी स्टार थ्योरी. Binary star. So this is sun. Yes, 99% of the mass of the solar system is in the sun. Another star passed from the vicinity of the sun. So sun and another star. एक और star आया और उसके पास से निकल गया. Is everyone okay? Now, please pay attention. So have you played in the childhood? You take a paper sheet, put a ball bearing on that, and put a magnet under it, and move the magnet. What happens? The ball bearing also moves. Yes or no? Why is the ball bearing moving? What is moving it? A magnetic field, magnetic pull is moving. Perfectly. So can I say when a star is coming, it will have its gravitational field? Yes or no? Will it attract the sun? Well, it attracted the sun and some matter from the sun came out. Which matter from the sun was pulled. Do we get that? The star left. अब sun क्या रह गया? ये sun है. And the matter which was pulled out was like this. Do we get that? So what kind of a hypothesis is this? That this is how planets were created. Planets were created from the matter from the sun. First sun was created from the sun because another star passed in the vicinity. The material from the sun was ejected out. The star did not take all that with him. तो पीछे छोड़ गया and all that material kept on revolving around the sun because of sun's gravitational field, and that has turned into present day planets. और यहाँ पर छोटे हैं and the big ones in the center. Is everyone okay? अब इसको 2-3 पेज लेकर Savinder Singh समझाते हैं. I have just told you the crux of it because it is not correct. चलेगा? Tidal hypothesis 1935 जीन जेफरी से. टाइडल हाइपोथेसिस क्या है? अरे भाई ये जो पुल होता है, रिमेंबर
द वाटर राइजेस बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द सन एंड मून, दैट इज टाइड। तो ये कौन सी फोर्स है? उन्होंने इसको टाइडल, एक टाइडल वेव की तरह से फोर्स कहा। तो सेम आइडिया बट गिवन अ नेम टाइडल हाइपोथेसिस, वेयर एज रसल कॉल्ड इट बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। दोनों सेम है, चलेगा। 1937 by H.N. Russell. Everyone with me? If you have Savindra Singh, now that you know what each theory is about, can you just have a look at it? Yes. And I want to share something very interesting with you. ठीक है, एक अच्छी सी बात बताता हूँ आपको, maybe that helps you. That's a hint to reading Savindra Singh. कई बार बच्चों को ना रीडिंग नहीं आता है, so they end up wasting time. Is it okay if I share something with you? So I was about to write my mains, and I was attending some classes on current affairs, international relations. Get that? So my teacher used to teach me all those things which were happening in the world. So mains pass में था, उतना time नहीं होता, you are trying to manage everything. So one day I missed the class. I said, these are easy areas, I can do it on my own. Otherwise, a friend of mine, he is attending the classes. I said, तू GS attend कर ले, मैं अपना optional कर रहा हूँ. I'll take the notes. So that's okay. Next day when I reached the class, I said, what did I miss? Please give me your notes. So he gave me the notes. So his notes were written like this. Everyone, please pay attention. I said, give me the notes. So his notes were like this. I said, क्या है इसमें? What do I read? ये तो सब क्रॉस हो गया. Where are the notes? Give me the notes. Whatever you made in the class, the teacher dictated. You would have written something. Remember, हम लोग वही सोचते हैं. For us, class means dictation, no? So I said, give me that. He said, यही है. I said, what is this? I don't understand. He said, whatever is written was dictation. Whatever is written was dictation. So the teacher was dictating, so I was writing. When I went home, I read it. I found this was so normal, this was general. He was just, like कुछ ऐसे फालतू का, dictation, not very important. This was important, and this data which he gave was very good. So I've highlighted that. And the crux of these two paragraphs is just these three lines. This was of no use. This was good. This case study he gave was good. The rest was there. And the crux of this is this. So when I have to read now, I just look at every page A, B, C, and D. So this is how you make notes. Can you do this to Savindra Singh? Savindra Singh is an unnecessary thick book. बहुत सारी बकवास है उसमें. Moment you read a page, keep a pencil with you, strike out. खत्म. Page finish. What was in it? Oh, you will find दो ही लाइन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Savindra Singh's book belongs to the generation of the copy paste times. वो हर चीज आप देखोगे कई जगह पर, तो पता है क्या है? The same 30 pages are copy pasted somewhere else also. Some other chapter में भी डाला होता है. वही वाला. Same material, almost the same. I don't know how many of you have seen Savindra Singh, but that is the case. Unnecessarily, the book becomes in kilograms. So a publisher came to me, he said, sir, would you be interested in writing a book on this topic? I said, yeah, okay. He said, sir, how many pages? I said, around 70-80 pages. He said, 70-80 is not wise, sir. I said, why? Well, 70-80, so sir, people will get it photocopied, no, book will not sell. I said, no. So what do I do? He said, expand kar dijiye, stretch kar dijiye, at least 150 to 200 words or 200 pages. That book sells better. Do you understand वो जो 600 पेज Savindra Singh के बने, क्यों बने और कैसे बने? आप देख लीजिए. Same diagrams picked up at many places, same pages and everything. Same thing. And for a student, when he looks at it, काफी भारी है यार. Unnecessary theory. जो कभी कुछ theory अब relevant ही नहीं. पहले पता क्या बताएंगे? पहले बताएंगे tidal theory क्या थी. First, he'll say what is tidal theory. Who was Jeffrey? Jeffrey का कैरेक्टर बताएंगे. इसके परिवार में कौन थे? माँ, बहन, भाई, चाचा, मामा, ताऊ, एवरीथिंग. कौन सी डिग्री ली थी? ठीक है, तो डेफिनेशन भी ठोकेगा उसमें. फिर टाइडल हाइपोथेसिस, फिर ये स्टार वो स्टार, और कितने स्कॉलर्स ने कहा. अच्छा, आइए देखते हैं इसके पॉजिटिव्स क्या है, आइए देखते हैं इसके नेगेटिव्स क्या है, आइए इसका कंक्लूजन देखते हैं. गुड, परफेक्टली ओके. आई हैव नो ऑफेंस टू दैट. दैट्स अमेजिंग. दैट इज अमेजिंग. आई एम सेइंग आफ्टर दैट यू रियलाइज इसको काट दो. सर डॉक्टर खुल्लर में भी बहुत ज्यादा है. बिल्कुल है. यू विल फाइंड द सेम थिंग. चल रहा है. कई तो चैप्टर आप पढ़ते पढ़ते आप सो गए हो. अच्छा, वहीं पर है, चल रहा है. कुछ डेटा चल रहा है इंडियन एग्रीकल्चर पे. कैसे नो? कुछ ही सिंह सर, योर ऑप्शनल इज आल्सो ज्योग्राफी. यार वैसे तो तभी पढ़ाना चाहिए. वो अलग बात है कि आई वेंट ऑन टू डू ज्योग्राफी एट JNU, बट देन आई नो ऑफ टीचर्स जिनका ऑप्शनल भी नहीं है, वो सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो दैट्स एब्सोल्युटली ओके. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज डिड वी माय सजेशन वाज, देखो समझदार को इशारा काफी है. मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा माओ वाला काम नहीं कर रहे थे, जो माओ जो है ना जड़ों पर नहीं कर रहा था. आप लोग ऐसे बेबी माओ हैं, यू मेकिंग द मिस्टेक. सर मुझे तो बुक से प्यार है सर, उस बुक को मैं अपने पिलो के नीचे रख के सोता हूँ सर, जीसी लिया सर. खुल्लर तो सर मतलब मेरी नेक को सीधा करता है सर, वही बेस्ट है सर. मैं तो अपने डंबल्स के लिए भी यूज कर रहा हूँ सर खुल्लर को, उससे मैं पास हो जाऊंगा. आई लव खुल्लर सर. खुल्लर की फोटो सब जगह लगा ली. तो सविंदर सिंह की जितनी भी फोटोज थी Amazon पे सब डाउनलोड कर ली. क्यों भाई? वर्क ऑन द रूट्स. सो एवरीवन, कैन यू स्टार्ट स्ट्राइकिंग आउट योर बुक्स? टेल मी, विल इट गिव यू कॉन्फिडेंस और नॉट? यानी बुक तो हो गई, मैं तो कह रहा हूं यार उसको भी स्ट्राइक आउट करो. कौन सी किताब है आपकी? लक्ष्मीकांत. पढ़िए स्ट्राइक आउट. व्हाटएवर यू डू स्ट्राइक आउट. दैट्स सुपर कॉन्फिडेंस. यू विल बी कॉन्फिडेंट. सिंपल लाइन, वन लाइन. ऐसा नहीं अब स्ट्राइक आउट कर रहा है तो उस पे पूरा गोबर कर रहा है. डोंट डू गोबर.
one line strike, done. What was important? This word was important, and this is my summary. ठीक है? So I hope I have given that, but remember, as a teacher, I'm supposed to give you everything. तो मैं इन सब पे एक लाइन दे रहा हूँ, चलेगा? चलेगा? So can I give this strike out from Savinder Singh? Suppose I don't even make a mention of this, then it is unfair on my part that my student doesn't even know. अगर question आ ही गया, suppose in a worst case question comes, discuss the theoretical understanding of evolution of solar system. आ गया, अब तो क्या करें? So should we prepare for that eventuality? Can we say that there were ideas which were pre-scientific ideas? The pre-scientific ideas included the ideas beginning from the planetesimal. The tidal and binary star hypothesis were in the assumption that one more star is passing by, that is why it is happening. तो थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं. अच्छा, ये एक बहुत अच्छा हाइपोथेसिस था, आज भी वैलिड है. नेबुलर हाइपोथेसिस, दिस आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड टू यू. This was this came much earlier, Immanuel Kant and later on a mathematician, Laplace. Kant and Laplace की हम बात कर रहे हैं. So they were talking about 16th to 18th century, और ये थोड़ा ना philosophical है. So Kant was a philosopher, so this was that. So nebular hypothesis later accepted in modern theories. So modern में भी बताओ. तो nebular hypothesis हमने डिस्कस कर लिया. 16th to 18th century इसलिए लिख दिया, पूर्वी 1755 लिखने की कोई ऐसी कोई खास जरूरत मुझे दिखाई नहीं देती. ठीक है. Interstellar dust, 1943. ठीक है. तो ये दोनों जो है ना, इन्होंने कुछ चेंज किया. Look at what is the change they have brought in. So I'm giving you the facts, everyone. Again, emphasizing that let me not fill up the class time and your limited hard disk capacity with nonsense stuff. तो पहला क्या था कि some matter is needed to create planets, and broadly we can see from tidal hypothesis and binary hypothesis कि the matter came out of sun. Do we get that? Matter came out of sun. Nebular hypothesis, Kant and Laplace were of the view that the matter did not come out of sun. In fact, why did I not consider it as a theory of formation of Earth? Because nebular hypothesis is not a formation of Earth theory, it is the formation of star. Do we get that? So they said that in the space itself, there is a lot of hydrogen and helium, and they called it the galactic dust. It starts coming closer, condensing and revolving and rotating, and through their collisions, stars are born. And when the star is born, whatever matter goes inside the star is a part of the star. Whatever is not used in the star is still left outside in the orbits. They later turn into planets. Do we get very clear distinction between nebular and tidal binary? अलग है या नहीं? Tidal binary आप कह रहे हैं कि planets are babies of mama star. Sun is the mama and mama से निकले. Nebular hypothesis says no. The space is full of dust and all that matter produces energy, fusion happens and other things happen. Everyone okay with that? Otto Schmidt, he is a Soviet scientist. Can you see 1943? So we are close to Second World War going on. And he is in agreement with Kant and Laplace. He also says, हाँ यार, sun से नहीं निकला. Actually, the stars are there in the universe. Universe is made up of stars. And between the stars, whatever space is there, in that space, matter is there. That is called interstellar dust. Get that? Interstellar dust. और उस dust के condensation से वो सब एक साथ आने लगता है. And when it starts compressing because of gravity, under gravity, what will happen? A star will be formed. Is everyone okay? So is the line coming clear to you? अब यही चीज Savinder Singh will take many pages. I am just giving you a clear thing with the assumption that if they ask us the theoretical underpinning of the solar system or planet, is everyone okay? A logical question that comes to my mind is, the first ones, there is no proof of that thing. The second one which you are saying, so if stars are formed or planets are formed of interstellar dust, तो हर जगह तो नहीं बनते. ठीक है. अब रेहान का सवाल है फ्रॉम वेयर गैलेक्टिक डस्ट कम्स. तो रेहान एक फाउंडेशन कोर्स कराया हमने बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स. उसमें हमने बच्चों को बताया बिग बैंग क्या होता है. रिमेंबर बिग बैंग क्या होता है? ऐसे किया था. बिग बैंग सब तक गया था. बिग बैंग से क्या बना था? एनर्जी एंड मैटर बना था. मैटर में क्या बना था? गॉड पार्टिकल्स. इफ यू रिमेंबर द डिस्कशन ऑफ गॉड पार्टिकल्स, फर्स्ट पार्टिकल्स, देन सब एटॉमिक, देन एटम्स, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, देन हीलियम, एंड देन आई टोल्ड यू द होल स्टोरी. ऐसी कोई बात हुई है कहीं पर? तो बेटा अगर मिस किया है तो बड़ी गड़बड़ है. अब आप पूछ लो कहाँ से आया इंटरगैलेक्टिक डस्ट. तो उसे ही वो जो मैटर जो स्पेस में है, उसे ही इंटरगैलेक्टिक या इंटरस्टेलर डस्ट कहा जाता है. एंड द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, वही है. और मैंने ये भी बताया था कि द सन विल ब्लास्ट. एक स्टार की एक लाइफ साइकिल होती है. स्टार की लाइफ साइकिल बताई मैंने. हाउ इज इट बॉर्न, फिर उसमें कैसे बनता है, पूरा एक स्लाइड आप लोगों के साथ फाउंडेशन में शेयर किया है. So foundation कर लीजिए जो बच्चे नहीं आए. I can understand some of you are absolute beginners. Chandra limit and all we shared on that. So now when a star explodes, supernova, okay, so whatever is in the star, will it be spilled over into universe? That will also form galactic dust. True or not? तो आपने पूछ लिया कि galactic dust क्या होती है. पहला तो I
Hope I gave you the answer. Second is thank you for asking that question. That tells me that many of you are beginners and who have not watched neither the foundation nor this course आज ही आए हैं, बीच में कभी भी ज्वाइन किया होगा. So there are gaps. उन gaps को प्लीज फिल अप कर लीजिए. सर कब करेंगे सर, जीने मरने की फुर्सत नहीं है. So happy Holi in advance. कल क्लास नहीं है. Yes, उसके बाद नेक्स्ट क्लास कब है? When is the next class? 21st को है. सोचो यार कितने दिन है. उस समय अपनी डायग्राम बुक खत्म करो. 3 days मिला है, अपनी डायग्राम बुक खत्म करो और ये फाउंडेशन की वीडियोस देख लो. क्या टेंशन है? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? The course has been so designed, उसमें कई जगह पे छुट्टी रखी जाती है. And I tell my students whenever they are making a planner, they should keep scope of gaps. जितना gaps दोगे उतना your planner will be actually executed. When we don't give gaps, no, then the problem comes. So ये होली के पास हमने इसलिए छुट्टी रखी थी कि festival is also there, and apart from the festival, you will get revision. Revision है, gaps हैं, तभी possible है भाई. Civil services preparation is a marathon. चलिए. So I have given you full idea कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टाइम भी बता दिया. Please make use of it. That will work for you. और कुछ नहीं का रिवीजन भी हो जाता है, कुछ रिवीजन तो हो ही जाता है. बाकी मैं बहुत टारगेट देता हूँ आपको, काम देता हूँ, तो वाला करना है, करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा. चलिए, तो एक क्वेश्चन ये आया कि गैलेक्टिक डस्ट इज एवरीवेयर, व्हाई आर स्टार्स फॉर्मिंग वेयर दे आर फॉर्मिंग ओनली इन लिमिटेड एरियाज. तो उसके लिए एक थ्योरी आ गई, इसको क्या बोलते हैं, सुपरनोवा थ्योरी. अभी बताया ना, सुपरनोवा एक स्टार बर्स्ट होता है, सुपरनोवा हाइपोथेसिस. ये आया 1946 में. ये एफ हॉयल, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिशियन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में. और इन्होंने देखा कि जहां सन बना है, वो वैसे सेइंग आई विल बी बैक आफ्टर कंप्लीटिंग प्रीवियस क्लासेस, वो वैसे यू शुड डू दैट. ठीक है, फाउंडेशन कर लीजिए और मंडे से करिए, कोई टेंशन नहीं. नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं अभी भी. हम इवन जियोमॉर्फोलॉजी, पहले तो आप एक काम करिए ना, कोर्स ओरिएंटेशन और ब्लूप्रिंट देखिए आज का, इस कोर्स का ना, वो देख लीजिए, दैट विल टेल यू अ लॉट. चलिए, बाकी लोग वो वैसे कीप योर लर्निंग कंटिन्यूड व्हिचएवर वे यू वांट टू. आई हैव गिवन यू द सजेशन. बाकी लोग सुपरनोवा हाइपोथेसिस. सो इनका ये कहना है कि एक्चुअली स्टेलर डस्ट इज देयर, इंटरस्टेलर डस्ट इज एवरीवेयर. यस, तो जहां पर ये इंटरस्टेलर डस्ट है, दिस इज द रॉ मटेरियल. यहां पर क्या बनना है फ्यूचर में, सन विल बी क्रिएटेड. बट व्हाट कॉज दिस डस्ट टू गेट कंप्रेस्ड, तो यहां फ्रेड हॉयल कहते हैं कि ऑलरेडी एक स्टार था यहां पर, कंपेनियन स्टार व्हिच वाज ग्लोइंग, एंड उसकी लाइफ खत्म हो गई, एंड दैट एक्सप्लोडेड. उसने क्या किया, वो एक्सप्लोड हो गया, सुपरनोवा. एंड सुपरनोवा गेव आउट शॉक वेव्स. शॉक वेव से क्या होता है, ये सारे कंप्रेस होना शुरू हो गए. डू वी गेट दैट? एंड दैट कंप्रेशन ट्रिगर्ड fusion for the sun. तो ये mathematician, he calculates and he gives us this idea. Everyone with me? अब हम आ गए पोस्ट वर्ल्ड वॉर, और यहाँ पर आ गया बिग बैंग हाइपोथेसिस. अब ये मैंने फाउंडेशन में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द बिग बैंग हाइपोथेसिस. जो भी मैंने बताया कि लाइक इनिशियली व्हाट वाज देयर वाज एन इनफाइनाइटली स्मॉल डेंस पार्टिकल कॉल्ड एज सिंगुलैरिटी. ऐसा बताया था, सिंगुलैरिटी. That point, infinite density, infinite mass, that exploded. When did it explode? 13.8 billion years ago. It exploded, and since then, origin of universe happened. All space and time starts from there, and it's expanding. Remember that the expanding universe theory से बना है Big Bang hypothesis. ये भी मैंने foundation में बताया. So why don't we call it theory? Why we are calling it hypothesis? Theory is something which is final, all tested, all proofs done. Big Bang में कई चीजें अभी prove नहीं. So do we have any other theory? No, we have something called as steady state or pulsating universe theory. Steady state or pulsating universe theory. एक और थ्योरी आप सुन रहे हैं, मल्टीवर्स थ्योरी. जैसे यूनिवर्स मीन सिंगल यूनिवर्स, मल्टीवर्स मीन देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस, बहुत सारी. तो जो आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में देखते हैं, मिडिल वर्ल्ड, हायर वर्ल्ड, लोअर वर्ल्ड, ये सब फिक्शन इधर भी डाल दिया लोग. ठीक है, और उसमें आ जाएगा कि पाताल लोक भी है, ठीक है, स्वर्ग लोक भी है, नाग लोक भी है, दैत्य लोक भी है, देव लोक भी है. सर सी, वी न्यू मच बिफोर देम. दैट इज व्हाई आई सेड इंडियन वेदास न्यू एवरीथिंग. ठीक है भाई, मैं तो मना कर ही रहा हूं. इंडियन वेदा क्या, हॉलीवुड नोज एवरीथिंग. व्हाई हॉलीवुड? बॉलीवुड नोज एवरीथिंग. व्हाई बॉलीवुड? एकता कपूर नोज एवरीथिंग विद हर नागिन. यस, टेंशन में कौन सा वेदा पढ़ना है? वेदों में तो जाने की जरूरत नहीं. एकता का पता नहीं, दिमाग से सोचती है, दिल से सोचती है, किडनी से सोचती है, गुर्दे से सोचती है, जहां से भी सोचती है, लगती बहुत सही है. यस नो? एसगार्ड, बिल्कुल एसगार्ड हुआ क्या तुम सोच रहे हो? नागिन तो छोटी चीज है. विष कन्या, वैम्पायर्स, ये सब अपने ही है, हम नहीं सोचे थे. तुम लोग टेंशन में यार. वैम्पायर्स, विचेस, ऑल क्रीचर्स यू कैन थिंक ऑफ, अपने पास तो सब थे यार. तुम लोग टेंशन में ऐसे कि ये वेदा में लिखा था. वो तो मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो कुछ क्रीचर्स तो मैं भी बना लेता. तुम लोग मुझे ऐसे ऐसे क्रीचर मिलते हो ना रोज. इच्छाधारी बैठे हो यहाँ पर, कितने लोग इच्छाधारी बैठे हो सब बताने के बाद. सर वो तो ठीक है, अर्थ तो गोल है, लेकिन क्यों है सर बताओ. तुम्हें पता है कौन से लोग पे भेजना चाहता हूँ मैं तुम्हें? गोल लोग तुम्हारा. डू यू गेट दैट? और वो जो इच्छाधारी टीचर है, जिनको सिर्फ उन्हीं को आता है इन दिस इंटरनेट एज,
सिर्फ उन्हीं को आता है। क्यों? क्योंकि उनको योगी फ्रॉम हिमालय, रिमेंबर वो एनएससी की चीफ जो है योगी फ्रॉम हिमालय से मेल आती थी, दिस डे दिस एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हेड ऑफ इट, शी सेज मुझे योगी फ्रॉम हिमालय मेल भेजता है और बताता है आज काफी सुंदर लग रही हो। अरे बड़ा तगड़ा योगी यार, बाबा जी बोला था, सॉरी यार। तो इमेजिन गुफा में जाने का कितना शौक है हम लोगों को। सो व्हाई वुड अ यूपीएससी टीचर नॉट बिकम बाबा रहीम? ये सुनो, यूपीएससी बाबा है ना हमारा आईएएस बाबा, इसीलिए बनाया, एकदम क्लियर फिट करता है लोगों को। हमारी साइकी ऐसी, बाबा कहीं मिल जाओ। मैं सोच रहा हूँ नाम बदल लूं, स्वामी सचिनानंद कर लूं, फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। स्वामी सचिनानंद सेशंस ऑन ज्योग्राफी। फिर देखो ये देखो शिवाजी सचिन सर बाबा, शिवाजी इसीलिए बोल रहा हूँ, इनोवेशन चाहिए इवन नाम में, स्वामी सचिनानंद। और करना ही है तो श्री तो लगा, श्री श्री 1008 से कम नहीं लगाना है, इट शुड गो इन थाउजेंड। जैसे 1000 वाले तो श्री श्री ऑलरेडी देयर। हाँ थोड़ा जीरो बढ़ाओ, थैंक यू सर, मैं जीरो बढ़ाने वाला पक्का, जीरो बढ़ाऊंगा। ये सुनो बताओ, जैसे ही मैं देखता हूँ एकदम से आ जाता है श्री स्वामी सचिनानंद, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नागहरी फलाहरी बाबा, ये बहुत सही है। हाँ और बोलूंगा कि अगर मुझसे इन्वायरमेंट पढ़ लिया तो एग्जाम में कुछ भी लिख कर आओ आप पास होगे। ये सुनो, वो है ना अपना कौन सा बाबा है जिसका आइलैंड भी अब तो, नित्यानंद बाबा। मैं नित्या को चैलेंज देने वाला हूँ। सो इतना मैंने कोचिंग के टीचर सब देख लिए हैं, मेरे को लगता है यार ये टीचिंग क्यों आ गई, बाबा क्यों नहीं बन जाता है। बोला मेरे पास ही किताब थी, चाचा को बोला बाकी तो किताब ही नहीं पता थी। तो तुम यूनिवर्सिटी कभी गए ही नहीं, तुम पढ़े ही नहीं, तुमको कैसे पता होगा भाई कि किताब किस किस को पता है। बट देन गुफा में तो कुछ लोग ही आते हैं, हूं नोज गुफा के बाहर, तो अंदर कुछ भी बोल दो भक्त बनाने। So everyone, do you understand this is the sequence? Don't worry about that. Broadly, do you understand what is pulsating universe theory? Pulsating universe theory is an expansion of Big Bang. Big Bang में क्या हुआ? There was in the center everything blasted. तो बोला blast तो हो गया, but a point will come, it will reach the maximum expansion and it will shrink. So universe is pulsating. दिल की तरह धड़क रही। कसम से बता रहा हूँ, एकता कपूर से आया और कुछ नहीं। ठीक है? मैं तेरे दिल में धड़कना चाहता हूँ। ये सब स्टूपिड आइडियाज हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहता हूँ, आईएएस बन जाएगा। बट मैं वो दिल में धड़कना चाहता हूँ, बना दिया, यू कांट स्टॉप इट। मल्टीवर्स तो मैंने आपको बता दिया, देयर आर वर्ल्ड, अपने को तो एक ही पता है, अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड पे भी एकता कपूर ने सीरियल बनाया हुआ। जैसे अभी कौन सी बाई आई है, विच बाई हैज कम, नई मूवी। वैसे मुझे पता कश्मीर फाइल के अलावा कोई मूवी नहीं आज की डेट में आप लोगों के पास, गंगू बाई। ठीक है, तो ये भी सारा अंडरवर्ल्ड और न जाने किस किस के साथ जोड़ देता है। बट रिमेंबर ये बिके हुए हॉलीवुड वाले हैं। सच्चे हॉलीवुड आप जानते हैं मूवी कौन सा वाला है, तो सच्चा हॉलीवुड कौन सा है, कश्मीर फाइल वाला। बिका हुआ हॉलीवुड कौन सा है, वो ये वाला। तो असली किसने दिखाया, आई डोंट नो। ट्रू, बहुत सुंदर। सो हमारे यहाँ बहुत क्लासेस हैं, बहुत सारे हर तरह के लोग हैं, इसलिए मूवी जो बनाओ हिट हो जाएगी, मूवी जो बनाओ हिट हो जाएगी, खाना जो बनाओ बिक जाएगा। ये सुनो, खाने वाले बहुत हैं। किताब जो पढ़ा दो, जैसे पढ़ा दो, चल जाएगी। ये सुनो, एंड इफ यू हियर समवन कि ही इज द गॉड ऑफ हिस्ट्री, गॉड ऑफ पॉलिटी, गॉड ऑफ ज्योग्राफी, गॉड ऑफ दिस थिंग, तो रिमेंबर 33 करोड़ होते हैं। यू विल फाइंड गॉड ऑफ हिस्ट्री की लाइन लगी हुई, गॉड 1, गॉड 2, गॉड ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी मैम है, ये बायोलॉजी मैम 2 है, ये बायोलॉजी मैम 3 है, 3 देवी। हम लोग सिर्फ देवियां बनाते हैं। ये सुनो, हर तरह की। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट, कैन यू बी द गॉड ऑफ योर ओन फेट? समझ में आ गया, खत्म हो गए, एवरीथिंग इज डन इन दिस पेज। अगर थ्योरी कहीं पर भी आती है, ये कंटेंट है। कंटेंट का वैलिडिटी इनवैलिडिटी समझ में आ गया, अर्थ फॉर्मेशन की बात हो रही है, मैंने जो बताया वो प्लैनेटरी एक्वेशन में अभी बताने वाला हूं। दैट इज माय फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज गोइंग ऑन। इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? यहां तक क्लियर है? चलिए, तो अब मैं जा रहा हूं अपने इस पर बिग बैंग। बिग बैंग पर आ गए, ओरिजिन ऑफ अर्थ ट्रस्ट। ये यहाँ पर मटेरियल भी, पढ़ने के लिए मटेरियल भी है। नोट्स आपको समझ में आ गए, हाउ वुड यू मेक योर नोट्स? That was just a sample, and I always believe, and that's a little sad. I've seen, at times it happens. You will find a genuine topper, and a genuine teacher will always say that this worked for me, or the teacher will say this is one of the good, efficient ways. You know, भक्त फ्रॉड बनाने वाला would say this is the only way. ऐसे नहीं करा तो पास ही नहीं हो सकता। This is the only way. उनको एक ही पता है, my way और highway वाले। You will find, and because we want to be a follower. Though God has given us something that we can lead, but we want to be a follower. So moment someone says my way is the only way, हम एकदम फॉलो करते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप कभी पास ही नहीं हो सकते। अरे यार, टेल मी वन थिंग, दिस पर्सन हैज ऑलरेडी अ गुड लैंग्वेज, तो उसने थोड़ा सा पढ़ा ऐसे, बट ही वाज एबल टू राइट बेटर, ही गॉट क्लियर्ड। यू आर अ पर्सन, योर लैंग्वेज इज वीक, ओनली यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, ओनली यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। You follow his medicine, it may not work for you, true or not? Yes or no? So that's what I'm saying, that is what I'm saying. So everyone, you are having वेट, आपका वेट प्रॉब्लम है, वेट इज वेरी हाई, आपका जो बॉडी वेट है बहुत ज्यादा है। ठीक है, नाउ आई टेल यू दैट योर बॉडी वेट, अपना खाना को कंट्रोल करो यार, ईट लेस फूड मैनेज करो एंड बर्न एज मेनी कैलोरीज। सो यू ट्राई एवरीथिंग एंड यू फाइटिंग, नथिंग इज हैपनिंग, यू सुपर डिप्रेस्ड।
Finally, you go to a doctor, and the doctor says everything is fine. This is so good that you're doing, but your problem is that your hormonal imbalances are there. Probably your thyroid is not functioning well. You need to get that in order. So you get medicine for thyroid. This is in order. This is in order. You start losing weight immediately. Yes or no? And you become fit as you want. Now tell me, what was the decider? This or this? Now this is what the sports person is telling you. Sports person or the YouTube is telling you. रोज जो है अपनी कैलोरीज बर्न करो. देखो इतनी कैलोरीज खाया, इतना बर्न किया. आपका डाइट प्लान भी बनाता है वो. डाइट प्लान भी बताता है और हो गया. True. Whereas the issue was there. So only you know what is the issue. Only you know what is the issue. Would you be doing that honestly or not? नहीं करते. हम इसको फॉलो कर रहे हैं and then we are feeling बेचारा. And then you know what this YouTuber says? Okay, I am guys coming up with a 7-day diet plan, life plan, 500 rupees per person. Join me कर लेगा. Will it help you? No, it will not help you. Then you say, this is not helping you. You find someone. He says, नहीं बाबा का आश्रम है. बाबा के आश्रम में जाओ. उधर 7 दिन में 15 kg रिड्यूस करा देता. Then you go to 7 दिन 15 kg. बाबा के आश्रम. बाबा के आश्रम में you get a booty. बाबा जी की बूटी. बहुत मजा आया. Then you said, अबे छोड़ वेट. मुझे तो यही अच्छा लग रहा है. मैं तो बाबा जी के साथ ही रहूंगा. बाबा जी लड्डू खिलाइए. And then बाबा जी gives you the best लड्डू. कैसा? So इधर क्या होता है यूपीएससी में? सर मुझे इतना मजा आ रहा है सर, मैं एग्जाम दे नहीं रहा हूँ. सर प्लीज गिव मी अ जॉब. कैन आई मेक योर मटेरियल, स्टडी मटेरियल? वो फिर एग्जाम भूल जाता है. ही डजंट गिव दैट. सर मेरा टेलीग्राम भी है सर, मैं उस पर ना अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगा आप अकेले बाबा हो एंड प्लीज गिव मी अ जॉब. एंड ही स्टार्ट्स रनिंग अ बिजनेस लाइक दिस. सो अगेन प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज योर प्रॉब्लम. प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज योर प्रॉब्लम. सर कल आया था ग्रुप में कुछ ऐसा. आई डोंट नो हु सेवर इज देयर यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं. आई एम सेइंग कैन यू बी ऑनेस्ट. माओ की तरह से सिर्फ ट्री से बात करने से नहीं आएगा, जड़ पे काम करिए. कैन यू ऑनेस्टली फाइंड आउट व्हाट इज मिसिंग? ऐसा नहीं सचिन सर ने कहा ये मिसिंग है इसलिए मैं फेल हो रहा हूँ. नहीं भाई नहीं हो. एंड आई आल्सो वांट टू टेल यू ऑन सोशल मीडिया हु नोस देयर इज अ रूमर कि आज शायद रिजल्ट आएगा मींस का. मेनी पीपल विल से गाइस आई क्लियर्ड. अब उसमें क्या हो जाएगा? मेनी ऑफ यू फ्रेशर्स उनसे भैया क्या पढ़ा था आप पास हो गए. पहले तो ये नहीं पता भैया दीदी है कौन है. एंड यू नेवर नो इसके क्या अल्टीरियर मोटिव्स हैं. ट्रू नॉट. ही मे नॉट बी इवन राइटिंग सिविल सर्विसेज. कल परसों शेमलेस थिंग समबडी पोस्टेड ऑन माय दिस थिंग टेलीग्राम चैनल कि दिल्ली में वी नीड बॉयज फॉर डिलीवरी ऑफ वाटर बॉटल्स. ये सुनो. अच्छा पेमेंट भी दे देंगे. कुछ आया था ऐसे ऐड आया था कि नहीं आया था? वो भी सोचो चैनल पर ही मार्केटिंग गाय. उसने कहा यू आर लिविंग इन दिल्ली, 2 घंटे जो है बिस्लरी की बोतल इधर उधर करो तो आपको पैसा दे देंगे. तो दिस गाय हु विल पोस्ट दैट मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है झूठ भी बोल रहा हो सकता है. he might be looking for this. There are many stalkers like this यार. लड़कियों का आईडी लेकर बहुत सारा परेशान करते हैं. We get to know all those news. प्रियंका सिंह कल जीएस का टेस्ट था इसलिए डायग्राम बुक का वो सुबह किया था सर, क्लास की स्टार्टिंग में टेलीग्राम पर सेंड कर दिया था. प्लीज चेक नेक्स्ट टाइम देयर विल बी नो डिले. ठीक है प्रियंका, अभी भी पूरा वीकेंड है ना, काम करना है. तो अभी खत्म नहीं हुआ. इनफैक्ट क्लास के स्टार्टिंग में आई हैव गिवन अ फीडबैक टू व्हाट वे द होमवर्क शुड हैव बीन डन. इज एवरीवन ओके? कैन वी कम बैक? चलिए. तो इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया पर फालतू में अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करें. डू नॉट बी कैरिड अवे, स्वेड अवे बाय सो मेनी थिंग्स. यू विल बी सरप्राइज. देयर आर मेनी पीपल हु हैव नो इंटेंशन टू राइट सिविल सर्विसेज. वो सिर्फ बिजनेस के लिए है. क्या कर रहे हैं यू नेवर इवन. आप सीरियस हैं? डू यू हैव सर्टेन लिमिटेशंस? वेयर वुड यू वर्क ऑन? ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन. रिमेंबर कल किसी ने कहा था इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पहले लिखना होता है. अभी आंसर आता है इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे करेगा? ट्रू और नॉट? तो ऑलवेज वर्क एट द बॉटम. ऑनेस्टली करिए, रूट्स पे काम करिए. इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ऑटोमेटिकली आएगा, हमेशा आएगा. सो कूलिंग ऑफ अर्थ स्टार्टेड. एंड पहले क्या बन गया? प्राइमोर्डियल क्रस्ट. बना या नहीं बना? ये कैसे बना? दिस वाज क्रिएटेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज प्लैनेटरी अक्रीशन. अब बहुत सारा टाइम लगता है इसमें बच्चों रिपीट करने में पूरा का पूरा. सो फाउंडेशन क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया सो दैट यू कैन रीड आल्सो that how the solar system was created and how certain material did not go into the sun, kept on revolving, and that has created through planetary accretion it has turned into a planet. अच्छा, planet is all molten. उसके बाद मैंने क्या स्टेज बताया था? this primordial crust blasted. पूरा का पूरा primordial crust हो गया. कैसे बना था? how was this primordial crust created? solidification of magma, cooling, outer surface cooled fast, इसलिए बन गया था. ट्रू. यहाँ तक क्लियर है सब लोग मेरे साथ? और फिर यहाँ पे क्या हो गया? वी सेड वोल्केनोज आ गए. देयर वाज अ डिस्टिंक्ट फेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस. और ये हमने एटमॉस्फेयर में भी किया. सो आई डोंट माइंड कुछ चीज रिपीट करना बट पूरा नहीं रिपीट कर सकते. तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मिस किया तो ऐसे होगा. नाउ व्हाट इज इन माय सिलेबस एवरीवन? आई एम गोइंग एज पर द सिलेबस. आई वांट टू गो एज पर द सिलेबस. माय सिलेबस सेज origin and evolution not of earth but earth's crust. So how did the crust originate? That is the big question. What is crust? They're not talking about earth. What is crust and how did it originate? So everyone, I want to remind you of this famous diagram, the pizza slice diagram.
एडवर्ड स्विस नाम के व्यक्ति ने, एडवर्ड स्विस, divided the earth into 3 layers: crust, mantle and core. Remember this, that earth's interior is layered, and it is layered because of a process called as density differentiation. अब question ये आ रहा है, my syllabus says origin of the crust. Everyone, the question is saying origin of the crust. तो जल्दी से बताइए crust का origin कहां से शुरू करूं? Where do I start my story? Where do I start my story? Origin of crust, everyone. And what do you know about crust? Okay, so most of you are प्रशांत surface नहीं कह सकते. राज बोल रहा है core. क्यों core कहना है राज? अरे बच्चों आपके सामने यार, आपके सामने बताया, यहीं पर बताया ना, अर्थ बनी है, कहां से बना पहला? ये मेरी क्रस्ट है, यहां से शुरू करना चाहिए. प्राइमोर्डियल क्रस्ट, दैट इज वेयर आई शुड स्टार्ट. भाई आई एम नॉट प्लेइंग अ कौन बनेगा करोड़पति, आई एम तो गिविंग यू अ स्मार्ट आंसर इन फ्रंट ऑफ यू. आई हैव टू टेल द एग्जामिनर हाउ वाज द अर्थ क्रिएटेड. सो माय फर्स्ट आइडिया टू द एग्जामिनर इज, इंट्रोडक्शन वगैरह छोड़िए, Earth's crust has evolved over successive stages. Evolved over successive stages. Are you with me on this? है ना? So the first one was created when the planet was formed. Primordial crust. कहने से अब गेस करना है, जल्दी से बताइए कब बनी होगी, अराउंड व्हाट टाइम, कब बनी होगी? प्रशांत इज सेइंग 4.6 बिलियन, प्रियंका इज सेइंग 5 बिलियन, 4.6. तो सभी लोगों से कहना चाह रहा हूं, प्रियांशु प्री कैम्ब्रियन तो है ना, 87% इज प्री कैम्ब्रियन. ये बढ़िया सर, प्री कैम्ब्रियन किसने बनाया सर? भगवान ने बनाया. आप गेस नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट अप्लाइंग योर यस्टरडेज क्लास. रिमेंबर हार्डियन 4.6 से 3.8, यहाँ पे सब कुछ मोल्टन था कि नहीं? इसके रॉक्स ही नहीं है, तो ये तभी का रहा होगा कि नहीं? फर्स्ट 800 मिलियन ईयर्स, ये तो ब्लास्ट हो गया ना. व्हाट विल आई से? लॉस्ट. कहां से आएगा ये आइडिया? जो पढ़ा रहे एवरी डे, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, लाइक माओ, यू हैव टू लुक एट द रूट ऑफ इट. सर ने कल जो पढ़ाया था, कैन आई ट्रांसलेट इट टुडे? इट इज इजी टू राइट प्री कैम्ब्रियन. यस एब्सोल्युटली ओके. कल किसी ने कहा सर आई न्यू द आंसर बट आई वाज नॉट एबल टू एक्सपैंड इट. डू यू नो व्हाट विल बी नीडेड फॉर एक्सपेंशन नाउ? यस और नो? ये सारी चीजें चाहिए होंगी यार, ठीक है. तो हार्डियन के बाद जब हमारे पास आता है आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक, तो कहने से ये आर्कियन और प्रोटेरोजोइक होगा. आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक में क्या हुआ? द प्रोसेस इज कॉल्ड डीगैसिंग. वोल्केनोज इरप्टेड. Volcanoes erupted, उससे क्या निकला हमारा? Atmosphere was created. And what was created? Hydrosphere was created. ये तो स्टेजेस हो गए, ये तो स्टार्ट हो गया. अब मैं पूछना चाहता हूँ, दो क्या आया, मैं पूछना चाहता हूँ प्रेजेंट क्या है? What is the present state of the crust? Present state of crust क्या है? तो फर्स्ट तो उड़ गया था. अभी what do you know about the crust? Just guesses. आज अर्थ की क्रस्ट कैसी? Solid. तभी solid थी बच्चों. Crust will be solid. What is crust? Crust is solidified rocks. नहीं. Solid and dynamic सब बकवास, सब बकवास. अरे भाई दो टाइप्स हैं यार. Oceanic beneath the oceans around 70% और continental which is around 30%. यहाँ पे क्या थी? इस टाइम पर क्या है? डीगैसिंग के टाइम पर क्या है? डीगैसिंग में बताओ, are there two types or one type? One type. And what is that type? Oceanic. Only oceanic. 100% oceanic because planet was पानी से covered. What is the topic? Origin and evolution of Earth's crust. हो गया. That's it. Job done. इसको explain करना है. We have to explain this. Can you explain this? Cooling led to the creation of a thin outer layer that was called primordial crust. But because there were lighter substances inside the Earth, they exploded. So this was lost or this was blasted. एक छोटा पैरा इस पर आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा सर, बिल्कुल ठीक है. Degassing पर after blasting what happened? Millions of years volcano, lot of water vapor came, and then millions of years rain happened. Because of that millions of rain happened, we had a water covered earth. So 100% was oceanic. Perfect. Now comes the third one. Third explanation you don't have right now. Do you have it or not? जल्दी से बताइए कि third क्या है? What is third? ये third कैसे बन गया? How did oceanic plate convert into continental matter, oceanic matter crust convert into continental crust? How did it happen? And why is it happening? That will solve my problem of the topic of the syllabus. वो नहीं तो problem.
So should we try and study the third one? थर्ड करें? चलिए देखते हैं. लोग वोल्केनो कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, कैसे हुआ उसको देखते हैं. थर्ड वन. So third के लिए let us try and understand something. Say for example, what is the crust made up of? Crust is made up of rocks. What are rocks? Rocks are aggregate of minerals. So what are minerals? Minerals are elements combined in fixed proportion. Elements combined in fixed proportion. Example दूं आपको. Example है silicates. Silicates क्या है? जिसमें सिलिका होता है और सिलिका के साथ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. Say for example, oxygen combines with silica to form SiO2. Yes, sir. And I also want to tell you, silicates are the most abundant minerals of the crust. ये भी पता होना चाहिए. सिलिकेट अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, सैंड इज सिलिकेट SiO2. सैंड जो है क्वार्टजाइट इज अ मिनरल. ठीक है, इसमें सैंड होता है, ग्रेनाइट होता है. ठीक है, इन रॉक्स में आपको क्वार्टजाइट मिल जाएगा. ठीक है, फेल्सपर ये तो SiO2 ही होता है. ठीक है, ये खूब मिलता है हमारे क्रस्ट में. सो सिलिकेट्स आर द टॉप मिनरल्स. उसके अलावा क्या हो सकते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड जो सिलिकेट के नहीं है, बट कैन देयर बी ऑक्साइड. आपने सुना है आयरन का ऑक्साइड हो सकता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो सकता है, पॉसिबल. कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, कार्बोनेट्स, कोरल लीव्स, कैल्शियम कार्बोनेट. सल्फाइड, उसको पाइराइट भी बोलते हैं, सल्फाइड अगर सल्फर. एंड रिमेंबर वी डिड नॉट हैव ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन जो मैंने आपको बताया था, तब तक ऑक्सीडेशन नहीं होता था, तब तक सल्फाइड हुआ करता था. सो आयरन सल्फाइड्स, FeS, आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड. ठीक है, हैलाइड भी हो सकता है जिसमें हैलोजन आ जाए, NaCl. इज एवरीवन ओके विद दैट? ठीक है. So Earth's crust is made up of rocks. Rocks are made up of minerals. Minerals are made up of elements, but elements combining in them. अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो हमारे रॉक्स हैं, रॉक्स जो है क्रस्ट के जो रॉक्स है, ये ऐसा देखा गया है कि if this is the Earth's crust and this happens to be water covered, ये ocean हो गया, and you are standing here, so you are on continent and this is ocean. So can I say this is continental crust and oceanic crust? So continental crust में less dense rocks है. रॉक्स तो है, दोनों ही रॉक से बने हैं, बट ये किससे बने हैं? डेंसर रॉक से बने. द ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर. ठीक है, तो ये जो लाइटर और डेंस होते हैं इनमें सिलिका ज्यादा होता है, आयरन ज्यादा होता है, तो फेल्सिक रॉक्स. कौन से रॉक्स हैं? फेल्सिक. ठीक है, सिलिका, आयरन, दे आर हायर. और जो डीप में है, जो ओशन के नीचे, उनको माफिक रॉक बोलते हैं, माफिक. ठीक है, तो अगर मुझसे पूछे तो मिनरल्स की बात करो. मिनरल्स फेल्सिक मिनरल्स से बने होते हैं. ये किससे बनते हैं? माफिक मिनरल्स से बनते हैं. व्हाट आर मिनरल्स नाउ यू नो? ट्रू. फेल्सिक मिनरल्स का अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था. क्या दिया था? सिलिकेट्स में जो आपको बताया, सिलिकेट्स आर जनरली फेल्सिक मिनरल्स. सिलिकेट्स में मैंने क्वार्ट्ज और फेल्सपर बताया आपको, क्वार्ट्ज, फेल्सपर. अच्छा, माफिक मिनरल्स कौन से? माफिक मिनरल्स आर ओलिवीन, ओलिवीन, ओलिवीन और ओलिवाइन एंड पाइरोक्सिन. get it? These are माफिक. Now the problem is some of you by now would have lost confidence. अबे यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है. There are so many minerals. How many will I remember? जो स्क्रीन पे है that is it. Crust is made up of rocks. Rocks are aggregate of minerals. Minerals are of different types. Silicates, oxide, carbonates. ये सब चीज से बना है. Yes. तो एक बात बताइए, लाइमस्टोन रॉक्स जो होते हैं वो इसी से बनते हैं ना? अभी आपने कुछ लाइमस्टोन पढ़ा होगा जीसी लियोंग में. वहां के रॉक्स में कार्बोनेट्स आर मोर. यस. और जो कॉन्टिनेंट में है उसमें फेल्सिक और मोर, फेल्सिक आर लाइटर एंड डेंसर. बट हमें तो सर मिनरल पता ही नहीं. हमें तो पता ओशन किससे बनता है? बसाल्ट से. ओके, परफेक्ट. व्हाट इज बसाल्ट? बसाल्ट इज अ रॉक. सो बसाल्ट का मिनरल क्या है? विल यू रिमेंबर? ओलिविन. एवरीवन विल यू रिमेंबर? बसाल्ट किससे बनता है? ओलिविन से बनता है. और ग्रेनाइट किससे बनता है? ग्रेनाइट इज द रॉक. सर वो क्वार्ट्ज ऑफ फेल्सपर से बनता है. ग्रेनाइट इज द रॉक ऑफ कॉन्टिनेंट्स. द रॉक ऑफ ओशन फ्लोर इज बसाल्ट. एंड डू यू नो व्हाट इज द रॉक ऑफ मेंटल? वो पाइरोक्सिन होते हैं. मेंटल में जो रॉक्स होते हैं, मेंटल का जो रॉक होता है उसको बोलते हैं पेरिडोटाइट. पेरिडोटाइट वो पाइरोक्सिन से बनते हैं. सर टू कॉम्प्लेक्स सर. अरे कुछ नहीं बताया मैंने अभी आपको ना ये बनाया था अभी. एवरीवन ये बनाया ना अभी. डिड आई मेक दिस? सो आई एम सेइंग यहां पर ग्रेनाइट रॉक होता है, यहां पर बसाल्ट होता है, और इसमें क्या होता है? पेरिडोटाइट. व्हाट इज द रॉक ऑफ कॉन्टिनेंट? ग्रेनाइट. व्हाट इज द रॉक ऑफ ओशन फ्लोर? बसाल्ट.
What is the rock of mantle? Peridotite. Which one is the densest out of the three? सर कोर का नहीं बताया. अरे कोर को मारना गोली, कोर में तो और भी डेंस हो जाएगा. सर पेरिडोटाइट इज द डेंसेस्ट. यस और नो? व्हिच वन इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल? सर ग्रेनाइट इज द लाइटेस्ट. ग्रेनाइट इज मेड अप ऑफ फेल्सिक. फेल्सिक. बसाल्ट इज मेड अप ऑफ माफिक. माफिक. व्हाट इज पेरिडोटाइट? सर ये तो बताया नहीं. अल्ट्रा माफिक. सो व्हाट इज अल्ट्रा माफिक? वेल अल्ट्रा, या तो चैंपियन है. नहीं, तू अल्ट्रा चैंपियन है. यस और नो? प्रो है, एकदम अल्ट्रा है. सो अल्ट्रा मींस अ हायर डिग्री. इज इट ओके? चलेगा? अल्टीमेट है भाई. इज एवरीवन ओके? इजी टू रिमेंबर. 3 रॉक बता दिए और 7 के मिनरल बता दिए. जहां डालना हो ये डाल देना. दिस इज इनफ टू टेल द एग्जामिनर दैट आई नो अ लिटिल बिट ऑफ जियोलॉजी एंड रिमेंबर दे आर आवर फ्रेंड्स जियोलॉजिस्ट. कल बताया था. अभी सिंह सर, आई वाचिंग योर प्रीवियस ज्योग्राफी कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी, कुड आई कंटिन्यू दिस एंड जॉइन लाइव नाउ? यस, अभी यू कैन जॉइन भाई, बिल्कुल जॉइन करिए. ठीक है, बल्कि ये वाला करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. लाइव में यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस आल्सो. सर ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, बट हम कर क्या रहे थे? लो, हम ये कर रहे थे. वी स्टार्टेड विद अ क्रस्ट, प्राइमोर्डियल क्रस्ट व्हिच गॉट ब्लास्टेड. Then we started with oceanic crust. Oceanic किससे बना होता है? माफिक नो? हेवी. बेसिक. ये क्या होती है? ये भी बेसिक होता है. बेसिक रॉक्स. सर बेसिक क्या होता है? अरे एसिडिक और बेसिक ना. ओशियानिक इज एसिडिक रॉक्स, कॉन्टिनेंट्स आर सॉरी ओशियानिक इज बेसिक एंड कॉन्टिनेंट्स आर एसिडिक. सर ये बेसिक एसिडिक समझ में नहीं आया. सो डू यू नो न्यूट्रल? यस और नो? इफ योर मिनरल्स हैव मोर बेस कंपोनेंट्स, दैट इज देयर. सो एसिडिक वो होता है जिसमें सिलिका ज्यादा होता है. इफ सिलिका इज मोर एसिडिक, इफ सिलिका कंटेंट इज लेस और आयरन और माफिक चीजें बढ़ जाए वो बेसिक होता है. डू वी गेट दैट? सो व्हिच वन हैज मोर सिलिका? कॉन्टिनेंट. एंड इमेजिन सिलिका इज सियाल नो. कॉन्टिनेंट वाज मेड अप ऑफ सियाल. सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों हल्के हैं ना. सैंड एंड एल्यूमिनियम बोथ आर लाइटर और नॉट. एंड व्हाट इज दिस मेड अप ऑफ? निकल एंड आयरन. हेवी मेटल्स वेंट इन द सेंटर. सो आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर लिखा है सियाल, यहाँ पर क्या लिखा है? माफिक वालों को क्या लिखते हैं? सीमा. डू वी गेट दैट? More silica you have, more aluminum you have, more felsic you are. More felsic you are. Yes. Less silica, more mafic you are. More denser you are. Everyone clear? Any questions on this? पूछो जल्दी से अगर कोई क्वेश्चन है तो. More crystal, less crystal, नहीं वो सब अभी छोड़ दो, वो आपको वोल्केनो में सिखाएंगे. Types of magma. Then I will teach you what kind of crystal. Big crystal, small crystal, not here. अभी तो बहुत बेसिक चीज बताओ. Now the question is Earth's crust, which was not there when Earth was molten. First came primordial crust, then came oceanic crust. Then how come these two are there, oceanic and continental? That was our third point. That is why we are talking about. That is why we are having this class. ये present state कैसे आया? तो पहले तो पता नहीं था कैसे आया, फिर हमें पता चला प्लेट टेक्टोनिक के बारे में. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अभी वो नहीं करवा रहा हूँ, but I'm just wanting to tell you that if this is Earth, if this is Earth, so Earth's lithosphere can be oceanic, can be continental, can be oceanic, can be continental, and when they come and collide with each other, that is called convergence of lithosphere. जो Earth का crust है, that is not a continuous layer, it is broken into components, blocks, and those blocks are called plates, continental plates. ठीक है, तो ये आपस में आसपास आकर स्टिक भी करती हैं तो उसको कन्वर्जेंस कहते हैं, और जब वो दूर जा रही होती है when they are going away, that is called divergence. ठीक है, so everyone please pay attention. This is Earth. What Earth? Water covered Earth. This is water covered Earth. What is on top? Water, water, water. Exaggerated, इतना thick नहीं होता water layer, but just exaggerated. Is everyone okay? Now what is happening is it is 100% oceanic, 100% oceanic. Now this one and this one are coming closer. When they collide, one of them goes inside. When they collide, one of them goes inside. This one. When they collide, one of them goes inside. अच्छा, inside क्या है? Inside what? Inside mantle. No, लावा वावा तो सब है. आप lithosphere आप crust is resting on what? Mantle. So mantle में जाएगा. Is mantle hot or not? Mantle is very very hot. So will this part melt or not? This part will melt. And remember, since these two are coming closer and they are colliding and one of them is going down, यहाँ पे gap create हो रहा होगा कि नहीं? Will there be a gap created over here? So what will happen through that? Also magma is coming. Is everyone okay? तो ये dynamics हो रहा है. When the second stage 100% oceanic lithosphere was created, then this dynamic started. That layer got cracked into slabs and those were the plates. They started converging. Some of it went down at places of convergence and at places of divergence a gap was there and magma came out.
Is everyone with me? तो अर्थ पर बहुत सारी चीजें हो रही है अर्थ की सरफेस पर, ठीक है. Now I want to tell you that I have wax. I have a candle. What is it? Wax candle. The candle is burning and the wax is rolling down. Wax is rolling down. I have a plate at the bottom and the wax will be collected over there. Is everyone okay? I heat the plate also and the entire candle melts. And now I have a pool of wax. Is everyone okay? Can this be mixed with? Can this be used again? Can this be used again? Yes. Perfect. Now I want to create a situation that this wax was not, this candle was not burning on a plate. This candle was burning on a pile of sand. अब किस पर है? Sand पर थी. The whole candle has been melted and now it's a mix of wax plus sand. Thick mix of wax and a lot of sand in it. Now will it burn? It can burn, but will it burn that efficiently? What has happened? Composition has changed. What has happened? Physico-chemical changes have happened. True or not? Is everyone okay? If there was ash, वो भी हो जाएगा. कई reactions हो सकते हैं ना? So everyone, let me take this part. Let me take this part and magnify for you. अब मैं magnify करता हूँ. ठीक है? So this is the plate, oceanic plate. It is going down beneath another oceanic plate. And there is a gap being created. Is everyone okay? What is beneath this? This is mantle. What is this crust? Which crust? What is it made up of? Basalt. Now when it goes in the mantle, everyone, when it goes in the mantle, it will melt. This will melt. When it goes in the mantle, this will melt. Get that? Now tell me what has melted. Basalt has melted. Where? Surrounded by which rock? Mantle has which rock? Mantle has which rock? So peridotite. Yes or no? Peridotite is there. Now if basalt has melted in peridotite, which one is the lighter, less dense out of the two? Basalt is lighter. If peridotite is heavy, will basalt have a tendency to come up or not? Will it come out? Basalt comes out. This is what? This is the ocean surface. Everyone with me? Because all this is happening when Earth is all this thing. And what happens is the gap is created. Through this gap, what is coming out? Peridotite is coming out. Peridotite. But when peridotite comes and when basalt comes, अब बड़ा interesting चीज होने वाला है. Basalt melt हो गया और peridotite melt है. One is basaltic magma, other is peridotite magma. No, I'm saying because of heat and everything, they are coming up. So at one place, peridotite magma is coming to the surface, and at other surface, which magma is coming out? Basaltic magma is coming out. I want to tell you, when they come out, both of them undergo physico-chemical transformation through a process called as partial melting. Bowen's series, I will train you when I'm talking about volcanoes. So what will happen? जैसे wax and sand experience what? Physico-chemical changes. It was no longer simple wax. So when basalt pours out, it is no longer basalt. What is it? It is andesitic. It is granitic. और इससे क्या बनता है? Continental crust. So who created the continental crust? Who created? Sir, the melting of basalt. Can I say oceanic plate is getting sacrificed? Oceanic plate is getting sacrificed, and in the process, continental crust is taking birth. True. Will it show up? No, it will not show up. When will it show up? Only when it rises above sea level. What will it show up as? Island. Island. Here also, island, island, island. Is everyone okay? So how much is the oceanic crust to begin with? 100% oceanic. Oceanic turns into continental. How? In the form of islands. What are these islands called as? Are they made up of continental material or not? So these are called baby continents. Baby के लिए हम क्या use कर रहे हैं? Is everyone getting a scientific explanation of how continents were created? Progressively, oceanic crust is getting destroyed, and that oceanic crust is giving birth to continental crust.
सर फिर तो ओशियानिक खत्म हो जाएगा एक दिन. Maybe not. Why maybe not, sir? Because of something very interesting. When peridotite reaches the surface, ये जो गैप था ना, इसमें peridotite रिलीज हुआ होगा. Yes or no? Peridotite. This also undergoes physicochemical transformation and this turns into basalt. So mantle is creating which crust? Oceanic crust. Oceanic crust is creating which crust? Continental crust. So oceanic crust भी है, continental crust भी है, और पूरा एक phenomena चल रहा है. This is happening inside the earth. Is everyone okay? So what do we have? We don't have a continent, we have PC. What is PC? Not Priyanka Chopra. Protocontinents. Earth is rotating, Earth is revolving, and these protocontinents keep moving. When they move, can they collide with each other? One protocontinent, दूसरा protocontinent, सारे एक साथ आ गए, इधर से travel कर रहे हैं. Possible or not? They will collide. Will they become bigger or not? One will become Gondwana. Other will be Angara land. ऐसा सुना है? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड. और दोनों जब एक साथ थे तब क्या कहलाते थे? पैंजिया. पैंजिया से पहले क्या थे? उससे पहले भी होंगे. कैन आई से प्रोटोकॉन्टिनेंट्स joined together, and do they only join or do they break apart also? सर टूट भी सकते हैं. तो joining breaking, they join, and all that process is called accretion. Accretion of protocontinents led to the creation of present day continents which keep on forming and breaking and forming and breaking and oceanic crust is getting destroyed, continental is being created. जल्दी से समझिए, ये ड्रॉ करिए, and if you have a question please ask me. Everyone clear? Diagram भी बन गया. Sir, when there is all oceanic plate are there, then all would have same density. Then which plate will subduct? ठीक है प्रशांत, अब बात ये है कि so there is this is how island arcs are formed. OCC. जैन जी प्लेट टेक्टोनिक में कराएंगे ना बच्चे. When I do all types of convergence, तो उसमें island arc बताएंगे. We will tell you what is a volcanic island arc. We will also tell you what is a sedimentary accretional island arc. We'll also tell you what is a composite island arc. वो सब आएगा. तो भी नहीं. What will happen to peridotite because it will be consumed and converted into basalt? बेटा रॉक्स है ना, सब चलते रहते हैं राखी. पेरिडोटाइट जो निकला, फिर कुछ होंगे, कॉम्पोजिशंस तो चेंज होती रहती है. यस, आपका मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर इज मेंटल ओनली. सो मेंटल के रॉक्स जो हैं उसमें कन्वर्ट भी हो रहे हैं. ठीक है, ब्रेक हुआ, फॉर्म होगा, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आर हैपनिंग और नॉट. मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. सर्टेन प्लेस विल गो डीप, और हम यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ मैग्मा भी सुनेंगे. वी विल हियर ऑफ हॉटस्पॉट वोल्केनोज आल्सो. ठीक है, जब पार्शियल मेल्टिंग सिखाएंगे वो. सो भी क्वेश्चन ये है कि देखिए दो प्लेट हैं आपस में. This is a lighter plate, get that? And this is denser plate. When they collide with each other, what happens? The denser ones goes down, subduction. So how with Earth rotation came together? No, not with Earth rotation. I'm saying Earth is rotating, so it also exerts the rotational force. में आपने सुना centrifugal force है ना? और फिर Earth के interior में भी forces है, convectional forces. तो उस वजह से protocontinents wherever they are not just at one place. They keep on moving. ये मैं कह रहा हूँ. ठीक है? I hope you got my answer. So basalt convert into andesite granite due to partial melting. हाँ प्रियंका, due to a process called partial melting. ये आपको सिखाएंगे when I am teaching you about volcanoes. Volcano का magma कैसे होता है? Bowen series I will be telling you about that. So everyone, this is what the question is. कि तो continents हैं. Continents are made up of lighter matter and oceanic crust is made up of denser matter. When they collide with each other, the oceanic denser goes down. Okay. So this is say for example, what do I say? You can take a train. Yes. And what is this? This is a bicycle or a motorcycle. So a train and motorcycle collision happens. So who will go down? Motorcycle, sir. So ये तो ठीक है.
bicycle, motorcycle will go down. Now I have a question to everyone. अब इन्होंने पूछा कि सर जब ओशन ओशन का कोलिजन होता है ये तो सेम डेंसिटी है, तो हाउ कैन सर इट गो डाउन? तो एक बात बताओ, if a cycle collides with a cycle, if a cycle collides with a cycle, is it possible that one cycle goes beneath the other one? होता है नहीं होता? साइकिल आपस में टकरा, एक ऊपर एक नीचे, क्यों नहीं हो सकता भाई? नहीं नहीं, स्पीड रिलेटिव क्यों कह रहे हो? आपको बताओ, मैं तो आपको बोल रहा हूँ पॉसिबल, पॉसिबल और नॉट? अब हम ये कह रहे हैं कि स्लाइट डेंसिटी डिफरेंशिएशन एकदम फिक्स नहीं है, स्लाइट डेंसिटी डिफरेंस इज इनफ फॉर वन टू गो डाउन। उनमें से जो भी रिलेटिवली थोड़ा भी डेंसर होगा वो नीचे जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। योर डाउट इज वैलिड that when they are both are denser, why would they go down? The fact is continental material once created never subducts. Why? Because it is lighter. Oceanic continent, when they collide, oceanic will go down, but when ocean when ocean collide, then also one of them will go down and oceanic will go down. I hope you got your answer. तो ऐसे बना है कि ये बन गया protocontinents were created, protocontinents accreted together, they come together, they join, they break also, they join, they break also, they join, they break also, and that led to the creation of continent. And gradually from 0% से अभी कितना आ गए? 30% continent, and oceanic has come from 100 to 70%. Can I say in the future it will further decrease and continent will further increase? Why continent is increasing, so why can't continent decrease in the future? Well, because of this, continents are just getting collected. Similar explanation, if you remember, I told you about nitrogen in the atmosphere. Remember, nitrogen is 78%. It's an inert gas. It doesn't react with other things. So, क्या collect होती जा रही? It is getting collected in the atmosphere. Ammonia got disintegrated, nitrogen was released. It is getting. Similarly, argon is also a big component. Yes or no? 0.9. Argon भी है ना वहाँ पर 0.9. After nitrogen, oxygen, third is argon. Argon is also inert gas. That also does not react. जो भी बन गया वहाँ पे collect हो रहा है. Similarly, continental matter once created will keep on getting collected. Is everyone with me? Without तो पूछो. First topic done. First topic is done. I hope you understood that. अब उसके बाद इस पर आना है, लैंडफॉर्म्स पर आना है। सिलेबस पे जा रहा हूँ एंड आई जनरली गो बाय द सिलेबस एंड आई मेक श्योर। तो पहला ये फॉर्मेशन की थ्योरीज वगैरह पे था, इसलिए आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट। सो ओरिजिन में समझ आ गया थ्योरीज। इज एवरीवन ओके विद द थ्योरीज? ओरिजिन हो गया। इवोल्यूशन, डिड यू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन, द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन? सो दैट इज आल्सो डन। इज एवरीवन ओके विद दैट? एंड कैन यू राइट आल्सो, डू यू हैव डायग्राम्स आल्सो विद यू? तो राइटिंग एंड डायग्राम क्लियर होना चाहिए। इफ दैट इज नॉट क्लियर देन दैट्स अ प्रॉब्लम। बुक में क्या है मटेरियल जो आपको दिया जा रहा है? तो दिस मटेरियल हैज बीन और विल बी, will be uploaded. Whatever I told you, how it was there. कुछ theories भी हैं. Inhomogeneous Earth accretion theory. Remember from solar nebula what was there? Then catastrophic model. What is catastrophic model? How it was created, how rocks were created, origin and evolution of Earth's crust. Some early concept. So early concept remember pre-scientific uranium, thorium, rare earth metal सबसे बना है. तो ताकि आपको इधर-उधर ना भटकना पड़े, पुराने ideas भी दे दिए. Because theory also is needed, no? So just to take away of here, I have given you some theories. And then the modern idea also has been explained to you, how continental crust has evolved. So it is not known why certainly how many periods of mountain building have happened. और ये प्रोटो अटलांटिक और ये कैसे बने, तो ये सारी चीजें अभी बहुत क्लियर नहीं है, but then the fact is कि it is because of the subduction, ocean plate melts and it returns to continent. This is how it has been created. Plate tectonics appears to be the major force in crustal evolution for the last 2 billion years. तो ये एक लाइन अपनी जगह पर आंसर में यूज करना. For the third aspect, true. Origin of Earth, two set of theories, catastrophic, evolutionary. Remember पहले भी कल आपको बताया मैंने uniformitarianism and cataclysm. So there are certain catastrophic ideas. ऐसा हो गया, धमाका हो गया something, and then there are evolutionary. Catastrophic theories have hardly any evidence. Uniformitarianism, I've already told you yesterday. Nebular hypothesis, desk cloud hypothesis. So that has already been explained to you. Earth के अंदर क्या है? Core mantle and this thing is there. और इसमें seismic wave है, ये NCERT का, ये आज मेरा कराने का अभी प्लान नहीं है. So I want to go into forces and landforms because that is what I want everyone to look at. ठीक है? तो ये मेरा डिबेट अभी का नहीं है. I am stopping at this. My debate today is surface of Earth. Surface of Earth. How is it created? So as I told you, surface of Earth is non-uniform. Surface of Earth is non-uniform and constantly evolving. Why
Why is it not uniform? Why is it not static? Because things are acting on it. As things are acting upon it, different things are happening, so different results are coming out of that. Okay. So the set of forces which are acting, the ones which are acting from Earth's interior, these are called endogenetic forces. Endogenetic forces. एंडोजेनेटिक फोर्सेस में हमारे पास दो तरह की हैं, डायस्ट्रोफिक एंड कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस. ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्या है, विल अंडरस्टैंड. बाहर से एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या करना चाहती हैं? वो बस हर चीज को दे वांट टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग बैक टू अ इक्विलिब्रियम टू द बेस लेवल और डेटम लेवल. वो डेटम लेवल क्या होता है? मीन सी लेवल इज द डेटम लेवल. हर चीज को वो करना चाहिए. सो पहले कौन सी एक्ट करती हैं? एंडोजेनेटिक फोर्सेस एक्ट फर्स्ट. दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी फोर्सेस व्हिच हैव कॉज्ड द अर्थ सरफेस टू वेरी. प्राइमरी फोर्सेस व्हिच हैव कॉज्ड द अर्थ सरफेस टू वेरी. इज एवरीवन ओके? ठीक है. अब इन दिस वी हैव अ माउंटेन, वी हैव अ प्लेटू. माउंटेन्स एंड प्लेटूज आर कॉल्ड highlands. Plains and depressions are called lowlands. And exogenetic forces are happening and they are acting. Ab they are acting through some agents. And these agents are doing certain things. क्या कर रहे हैं? पहला चीज ये कर रहे हैं weathering. Is everyone okay? Weathering का मतलब the rocks, remember lithosphere is made up of rocks. Rocks are going to break. Ronak says weathering is sun. No, not sun. Weathering is the breakup of rocks in situ disintegration. इसको जबरदस्ती सन, मून, राहु, केतु नहीं करना. So weathering will happen. Well, weathering can happen because of thermal reasons. ठीक है, जिसको हमने कहा मैकेनिकल कारणों से, केमिकल कारणों से, बायोलॉजिकल कारणों से and anthropological कारणों से. Why am I talking about this? अब देखो बहुत से बच्चों ने यही डायग्राम बना दिया and they are saying that this is my diagram book. No, this is not your diagram book. ये तो आपके नोट्स हैं भाई, ये तो क्लास में बात हो रही. But what are the processes which are happening in mechanical? Mechanical में आप देखेंगे, आपको बताया heating and cooling. So heating, cooling, expansion, contraction. So what happens is the joints of the rocks become weak. उनमें क्रैक आ जाता है. ठीक है, that is possible. एक है something written as frost shattering. ऐसा कुछ लिखा है? What is frost shattering? So there are rocks which have cracks in them, and what happens is that the water goes and fill up these cracks. In frigid areas, this water will freeze. And do you know that ice occupies more volume than water? So when it freezes, it expands. What will it do to the crack? It will force the crack to widen. Next day, what will happen? It will, during the daytime, it melts. It's okay, रात को फिर से expand होगा. So imagine, childhood you've seen, कई बार पेड़ से आपने टहनी तोड़ी होगी, a branch of the tree, and you want to break into two. It doesn't break. So what do? Turn up, down, up, down, up, down. You do it many times, no, and then it breaks apart. Does it happen or not? Repeated action up and down. Same thing frost is doing. So will it break the mountains? Yes or no? Frost shattering is mechanical. तो किसका डायग्राम बनना चाहिए? So in your diagram book, don't make this which I have made. Frost shattering का डायग्राम. Frost shattering is a diagram. Exfoliation. वो तो अनियन की तरह. Remember अनियन में layers होते हैं. Yes. So if you have a rock whose minerals are in linear arrangement, ऐसा है, ठीक है? They will heat and contract. 1, 2, 3, 4. Now 4 layers are there. They will expand and contract because of heating. But remember, which one will heat more? The outer surface will heat more. So the expansion and contraction of outer layer may not be aligned with the inner layers. So because of that, with a period of time, what will happen? Will the layers get detached or not? When the layers get detached, the top layer may fall off. एक layer टूटेगा, दूसरा layer टूटेगा. So this is another way. Can I say this was working almost vertical cracks? This was working on vertical cracks. And can I say these are on horizontal joints? Gaps are created, and this will happen. Exfoliate. ये बनाइए. Not only that, GC Yong will give you example also किस जगह का है, case study example. This should go in your diagram, just the diagram, the name of the process, and an example. That's it. No more explanation. What is happening? Mechanical. Rubbing past, friction. Yes, आपने देखा होगा attrition, traction,
ऐसे बर्ड है रिवर के बॉटम पे, रिवर के बॉटम पर देयर आर पार्टिकल्स व्हिच आर जंपिंग विद द वाटर, साल्टेशन लिखा होगा, लिखा है अब्रेशन, अब्रेशन का मतलब रगड़, अब ये टर्म्स आनी चाहिए। So the wind is rubbing against the mountain, abrasion. So river has eroded and now sediments at the bottom and they are being transported with the river. So they are jumping, hopping, saltation, attrition, they are colliding with each other, attraction and all those things. Hydraulic action. इनके diagrams बनाओ। Hydraulic action किसका होता है? Waves का होता है। Waves. So suppose there is a hollow on the coastline. Wave comes and hits that. So now that hollow has wind in it, air in it. When the wave comes, will it compress or not? It will compress that entire air chamber and then the wave will go back. This repeated compression, expansion, that is the hydraulic action. जो थप्पड़ है, मार है, that is also there. So when you're getting these terms, इनके diagram बनाए जाते हैं, not this. और ये बना के flow chart बना रहे हो and calling that as diagram book, that is wrong. Do we get that, everyone? So first process is weathering. Now things which are weathered, they will start moving down slope. वो सब क्या करेंगे? नीचे आने लगेंगे. And that is called, what is that called? मास वेस्टिंग। ठीक है, आपने सुना होगा क्रीप, फॉल, स्लाइड, लैंडस्लाइड सुना है? सो लैंडफॉल, लैंडस्लाइड, और ये जो टूटते हैं ना इनको बोलते हैं डेब्रीज। सो डेब्री फ्लो, फ्लो भी सुना है? एवलांच, मड फ्लो, सॉइल फ्लो। सो फ्लो, फॉल, क्रीप, स्लाइड, ये सारे क्या है तरीके? मास वेस्टिंग। सो व्हेन द माउंटेन इज गेटिंग वेदर्ड, इट इज ब्रोकन, तो वो डिसइंटीग्रेट हो गया, बट नाउ देयर इज दिस थिंग, gravity is there, it just comes down. So what is that called as? Mass wasting. Is everyone with me on this? Mass wasting के types जो हैं, fall, slide, flow, creep, that should go in the diagram. True or not? उसके बाद आ जाते हैं हम plains में। तो यहाँ पर क्या होता है? Gradation activity. Gradation. Gradation में आप देखेंगे कि या तो degradation हो रहा है, the river is carrying those sediments and degradation, या फिर deposit कर रहा है, aggradation. And what is happening in this process? Transport of sediments is happening. In this process, transport of sediment is happening. Do we get that? So first weathering happens. Weathering breaks the rock wherever they are. Now because these rocks are at a higher place, nature, because of the gravity, will cause them to move. Those debris will move. They can move slowly with creep, flow. They can go with slide, landslide, mudslide, catastrophic भी हो सकता है, fall भी हो सकता है, rock fall. तो ये अलग अलग टाइप्स हैं, उनके टाइप्स हैं given in GC Leong, ये देखना चाहिए और ये डायग्राम बुक में जाना चाहिए. When they have fallen, they have come. Now the rivers and wind and water, जो भी हमारे agents of erosion है, remember agents क्या है? Principal agents अगर आप मुझसे पूछे, तो एक तो water, fluvial and coastal, दूसरा क्या है? Wind, ebullition, तीसरा क्या है? Glacier, ice. ये मेन एजेंसीज, इनके लिए चैप्टर बने हुए GC Leong में कल हमने आइडेंटिफाई किया था, उनके डायग्राम बनाने. Don't write theories, but they have to be there. And each process has characteristic landforms. Each process has characteristic landforms. उन landforms का एक compilation हमें बनाना है. Is everyone with me on this? Am I clear? अच्छा, forces की बात कर रहे थे. Endogenetic, exogenetic. Which one is primary? Exogenetic. Is man also a force? We are living in anthroposphere. Remember, man. Is he or she modifying the Earth's surface? Seriously, sir. यहाँ पर अगर plants होते हैं, so they will not cause slide and slump to happen. Yes or no? Rehan is saying degradation and aggradation once more. अभी बताते Rehan. If man comes and blasts the mountain for roads, that's also a challenge. Yes or no? So there was this mountain. And what happened? The agents of erosion eroded it. Agents of erosion eroded it. Okay? What happens to the sediments which were there? ये sediments नीचे चले गए. And they come into the plain areas and the depressions and fill them up. Yes or no? This filling is called aggradation. This removal is called degradation. Yeah. Both the processes are called gradation. The North Indian plains कैसे बने? How the North Indian plains were created? North Indian plains are aggradational plains. Himalaya and Peninsular Block के बीच में एक deep था. Rivers have come and deposited the aggradational plains. Is everyone okay? Degradational कैसे बनते हैं वो बताता हूँ आपको. Degradation कैसे बनाते हैं देखना चाहते हो? Degradation. So suppose पहले forces देख लेते हैं फिर बताता हूँ. ठीक है? So forces and landforms. So अभी हम forces देख रहे हैं. क्या हम इनको geomorphic forces बोल दें? Is it okay to give that adjective? I'm keeping it very basic. As I said, 6 lectures. First 6 lectures of geomorphology will strongly put you into this fire. I know the diagrams.
I know the concepts, I know the vocabulary, I can play with it. This is not difficult. ये पहला होना चाहिए. Ah, this is interesting. You like it, then only you take it to the next level. No, अच्छा इसका तो आंसर राइटिंग हो सकता है. I can write the answer. Oh, this is it. Okay, I understand. That's the first thing. Get it? So geomorphic forces are the forces which are creating landforms. They are creating landforms. अच्छा इसमें जब हम प्राइमरी फोर्सेस की बात करते हैं, प्राइमरी, these are called endogenetic forces. Endogenetic, ठीक है. अब इसमें दो होती है, as I told you, sudden, catastrophic. I hope you are drawing this also. Catastrophic, sudden. Catastrophic और slow. Catastrophic क्या होता है? A volcano suddenly erupts. Possible? Eruption of a volcano is catastrophic. Eruption of a volcano is catastrophic. Everyone with me? और ये क्या हो सकता है वोल्केनो के बाद? Earthquake. They happen from Earth's interior. We have separate chapters on that. One day I will talk about volcano and earthquake also. So not today, but be okay with it. I'll also talk about the diastrophic ones. Tectonic. Tectonic, the word comes from builder. ये build करती है. They build. They are the building forces. They build the lithosphere. Tectonic. Eustatic. They are something to do with the volume of the ocean. Volume of the ocean. उससे भी forces बनते हैं. और तीसरा होता है आइसोस्टैटिक. ठीक है. तो आइसोस्टैटिक जो है ये क्या है? दिस इज टू डू विद इक्विलिब्रियम रीएडजस्टमेंट, इक्विलिब्रियम फोर्सेस, ऐसा ले लो आप. इक्विलिब्रियम फोर्सेस. So say for example you are traveling in a metro train. Yes, so you entered normally in the train, you were standing on your 2 feet and holding the like railing and everything was fine because that was the start of the train. And then people keep on coming on top and the train gets filled up. A point comes that you are standing only on your toe. एक toe पर खड़े हो, इतनी भीड़ है, वो भी एक एंगल पर, टेढ़ा खड़े हो. Yes or no? If that train is emptied, what will happen to you? So I'll come back to my normal position. Yes or no? Will you come back? Do you have to put any efforts to come back? No sir, वो तो मैं दबा हुआ था, ऐसे पीछे खिंचा हुआ था, एक ही पैर पे था. अभी जैसे छोड़ेगा तो I will come back. That is isostatic. So at times the earth surface is stressed. So when it is stressed, it is imbalanced. When the stress is removed, it will come back normal, isostatic. So who can stress the earth surface? Well, 33 crore Devi Devta, they have a lot of work to do. Add to it Jesus and Allah. If you don't want it, Pleistocene ice age was enough. Ice, the weight of ice was enough to tilt it. Yes or no? It was enough to tilt it. But ice will melt. When the melt is happening, it will come back. That is isostatic. But in the process, earth का landform तो change हो गया ना? That is that. Eustatic क्या? Eustatic is simple. आज होली का दहन है, कल होली है. Yes or no? Tomorrow you have Holi. Once again, happy Holi. So many people still use water balloons. Yes or no? Water balloons. Water balloon को क्या करते हैं? टैप पे लगाओ and then put water in that. So those balloons are really low quality यार. And moment you पहले तो टैप पे लगता नहीं है, टैप पे जैसे ही लगाया, moment you do that, it burst. Yes or no? Why does it burst? तो जरा सा होता है, ऑन करो, it just fills up over capacity. Yes or no? Expand this thing. But आपको भी पता है, many of you are there who want the bigger the better. इसमें ज़्यादा कलर भी होना चाहिए, more water, so that when I throw at someone पूरा दिखना चाहिए. I'm saying Earth's oceans have water in them, but more water, less water, can it distort their shapes or not? Can it distort their volumes? Just like that balloon, polyval. That distortion, the forces which are created because of that, those are called eustatic. So ये तो ocean से related होगी, ocean basin से related. और tectonic क्या है? Tectonic क्या है? Tectonic तो मैंने आपको बोला builder forces. अगर आप मुझसे tectonic पूछेंगे, volcano तो सबको clear है. At least today I am तो in the very elementary level. If the words are not clear to you, that should be asked. And after the class, dictionary में देखना भी चाहिए. So अगर मैं tectonic को लेकर जाता हूँ, tectonic, which are the builder forces. They can build continents and they can build mountains. Epilogenetic. Epilogenetic. Tectonic means builder. Builder of what? Builder of continent. Epilogenetic forces are continent building forces. And orogenetic. What are these? Mountain building forces. Get it? So generally it's very simple. Mountains कैसे बनते? Fold mountain कैसे बनते? जल्दी बताओ. Fold mountain कैसे बनते? Conversion, horizontal movement, horizontal force ना. अब दो चीजों के साथ मिला horizontal force. ठीक है? कहाँ पर? Fold mountain. Horizontal force causes the plate to bend and it creates a fold. तो mountain ऐसे बन गया. कौन सी force? Horizontal force, compressional force. Is everyone okay?
वैसे तो टेंशनल फोर्स से भी बन सकता है, टेंशनल फोर्स से ब्लॉक माउंटेन बनता है ना। तो इसमें क्या है, कंप्रेशन और टेंशन, कौन सी दो फोर्स है, compression and tension. But then there are certain things which can cause the ocean to the land to rise. These are called vertical forces. Vertical movement of matter to come up, that is called epilogenetic movement. Say for example there is magma inside the mantle, वो ऊपर आ रहा है, उसने क्या किया, lithosphere which was here उसको क्या कर दिया, ऐसे डोम बना दिया, yes no, has it caused this thing to get uplifted or not, टेक्टोनिक। और इससे क्या बनेगा, इमेजिन देयर वाज ओशन ओवर हियर, व्हाट हैज कम आउट, क्या निकल कर आया, लैंड हैज कम आउट, सो कॉन्टिनेंट हैज बीन क्रिएटेड। और सर ये भी तो माउंटेन है, जरूरी नहीं है माउंटेन है, बट आई एम सेइंग मैटर इज क्रिएटेड, ये तो माउंटेन रेंज हो गया ना, दिस कैन रन फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, बट ये थोड़ा सा एरिया डोमिंग से निकल सकता है। इज एवरीवन ओके? एपिलोजेनेटिक टेक्टोनिक प्लेटू बन सकता है, बिल्कुल ठीक है खुशी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो टेक्टोनिक मूवमेंट्स कैन बी हॉरिजॉन्टल, they can be vertical. Horizontal lead to the creation of mountains, so orogenetic, and epilogenetic are the vertical ones, which are the continent builders. Do we get that? So ये तो अंदर से आ गया, this has come from inside, but बाहर कौन आएगा, एक्सोजेनेटिक। इसमें क्या हो रहा है, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्ट, डिपोजिशन, ये सब नाटक हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन कर रहा है, एजेंट्स ऑफ इरोजन ये काम कर रहे हैं। व्हाट आर दे, वो आपको होमवर्क में कह दिया था, वाटर, विंड, आइस। हाँ बिल्कुल, स्नेहा ने कहा सर ये प्रोसेस ये सारा जो है डेन्यूडेशन है, डेन्यूडेशन, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सो डिक्शनरी वर्क समझ में आ गया सबको, क्या करना है कर सकते हैं। सो अभी खुशी ने कहा कि एक प्लेटू है, वन प्लेटू हैज बीन क्रिएटेड। A continental plateau has been created. कौन सी फोर्स बनाती, जल्दी बताओ, which force creates them? Sir, epilogenetic forces create them. Correct? Can I say epilogenetic forces? Everyone with me? Epilogenetic forces. अब ऊपर से क्या होगा, everyone please pay attention, please pay attention. Rain is falling. Rain is falling, fluvial. So rivers will be created, small rivers. What will they do? They will cut here. Why are they cutting? Why are they cutting? So because this is the datum, this is the base level. Are they above that or not? प्रियंका velocity छोड़ो, सबके पास potential energy है ना, they are much above the base level. So will they cut the area here? इस एरिया को कट करेगा या नहीं करेगा, रिवर कट करेगा। Can I say that in some time this land will turn like this? Who is doing this? कौन कर रहा है, सर रिवर्स आर डूइंग इट। तो रिवर्स ने अपनी वैली बना ली ना, रिवर्स ने अपनी वैली बना ली। एवरीवन विद मी, डोंट वरी अबाउट ड्राइंग, जस्ट कीप लुकिंग एट दिस। अच्छा यहाँ पर क्या है, दीज आर द रॉक्स, अपना उनका स्ट्रेटा होगा ना, सपोज दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स, तो उसके अपने लेयर्स होंगे। So why are they sedimentary? Can't they be igneous? They can be igneous. This is what we call is structure. I don't know. In my example, can I say this is a horizontally bedded sedimentary plateau? Vertically भी हो सकता था, vertically bedded भी हो सकता था, तो vertically bedded कैसा होगा? देखो भाई, एग्जाम्पल है, कुछ स्मार्ट लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है, आपका भी मौका है, होली है, पावन पर्व पे बनाना शुरू कर दो, ये वर्टिकली बेडेड है। Can you see? जिसमें वर्टिकल बेड्स है, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, will it get eroded differently or not? Simple. A question comes. इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ये बनाइए और जो मैंने बनाया वो बनाइए, हॉरिजॉन्टली बेडेड एंड वर्टिकली बेडेड, ये दोनों तो है, एक हॉरिजॉन्टली बेडेड एक वर्टिकली। यहाँ पर क्या होता है, सॉफ्ट वंस आर इरोडेड इजीली एंड द हार्ड वंस आर लाइक हाईलैंड्स या रैपिड्स बनते हैं। कितना अच्छा है, आई एम श्योर यू कैन आल्सो डू दैट। सिंपल, ये तो करना है, कर सकते हैं नहीं, दैट इज व्हाई द डायग्राम बुक। कई बार टीचर क्या करता है, टीचर खुद अपना डायग्राम बनाता है जिसको खुद ही मतलब इट इज नॉट वर्थ यूजिंग इन द एग्जाम, बट टीचर तो मतलब भक्त को तो लड्डू बहुत अच्छा लग रहा होता है ना, वाह सर वाह क्या डायग्राम है, उस डायग्राम की मतलब शक्ल देखकर तुम कहोगे यार क्या है। मेनी टाइम्स टॉक्ड अबाउट दिस, यू नो। There is a teacher on YouTube. He's saying, "Okay, boys and girls, time to teach you Indian map, India map. Just do it my way. Practice it many times. You will learn to draw it." ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, but I am trying. You will also learn. Just practice the way I am doing it. See, you can also draw it. अबे anti-national YouTube पे बना रहा है, proudly telling
See guys, I am the only, और वो भी यही बोला, I am the only teacher who knows how to draw a map. बोला अगर करोगे तो ग्रुप पे शेयर कर दो, फिर कॉपीराइट हो जाएगा, एक मास्टर दूसरा मास्टर का मजाक उड़ा रहा है, मजाक नहीं, तुम खुद ही देख. So it so happened a student, she is expecting her result if it comes today. She's already selected also. So she called me up and she got to know about this teacher, this master who makes like this. So I was just having a laugh at this and I forgot that teacher. So she gave me a call. She was my student. She said, sir, there is a big buzz about pen drive course by a geography teacher. So many of my known people have recommended me. So, sir, what do you say? I said, what's the name of the teacher? She said, this is the teacher. I said, oh, yeah. I said, wait. Let me forward you some videos of sir. मैंने क्या? Teacher forwarded. I said, give me a call after half an hour. She saw the video and she said, I'm saying she's selected. She is from one of the top colleges in Delhi. She's presented a research paper. She is a master's. I don't know whether she completed the master's or not. Physics honors and very very talented girl. Yeah. I said, चिंता ही मत कर. वो तो video पहले देखना. You will understand. यार ये तो he doesn't hold any water. But when he'll teach, he'll say, मैं ही तो जानता हूँ. I said, don't worry. Pen drive वाला तो जो भी होगा. I also want to tell you. Catch hold of this pen drive fellow who's telling you कि लेना ये उसका marketing कर रहा होगा. Maybe he has employed him also. कुछ पैसा भी दे दिया होगा. कई social media channel पे तो अपना staff ही comment कर रहा होता है. Wow, sir, when is your this course coming, sir? We are waiting, sir. When will the test come, sir? Is this released, sir? When will your notes come, sir? अपने में तो सब फ्री है ना, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो. जिसमें किसी ने बोला anyone delivery boy for water bottles. सोचो ये सब. And I also want to tell you, there was this newspaper दिल्ली में आया, इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया. Old Rajendra Nagar, UPSC aspirant caught snatching chains and mobile phone. So you don't know who's serious, who's not. लगे यार कुछ नहीं तो यार मोबाइल फोन ही छीन लो and all that thing. और इस टीचर के यहाँ पे ज्वाइन कर लो. True. कोई बात नहीं प्रियंका, you can see the recording. So that's what I'm saying. Please don't get into that. अच्छे डायग्राम बनाओ. ये समझ लो चीज. Horizontally bedded sedimentary rock, that is the structure. Can I expect my student to use this language? Sedimentary तो easy to erode है. Easy to erode. Can I say will this erode further? Can this erode further? Can this erode further? हो गया erode, erosion. I'm just showing you some things. And I'm just trying to introduce some basic things because I want you to do that. So can I say the river is now flowing over here? The river is flowing deeper. True. The river has cut. Why has the river cut? River is cutting because river को तो नीचे तक काटना है. Up to what point will the river cut? Till it comes to the base level. So the river is cutting. So where is the river flowing? The river is flowing here, sir. It is cutting or not? And what is in between? Sir, in between is this area. Yes or no? Can I say in between there is highland? True. Everyone with me? Can I say this is a ridge? And these are valleys, V-shaped valleys. V1, V2, V3. This is called ridge valley topography. The river which is flowing as a result of the slope is called consequent stream. Remember this word consequent. जो flow होता है उससे consequence of the this thing. ऐसे river काटती. अच्छा, do you know what are tributaries? Tributaries. Tell me, इधर से भी तो river आएंगी ना? They can come and join. Will they further help in cutting or not? This is how mountains are cut, and this is how tributaries are created. Is everyone okay with rivers and their tributaries? What is the process? Exogenetic process. Weathering, mass wasting. यहाँ से नीचे जाएगा ना? Suddenly there can be landslide also. Fall भी हो सकता है, debris fall भी हो सकता है. Possible or not? अच्छा, एक और चीज बताना चाहता हूँ. कभी-कभी folding से भी बन जाता है. Folding of the mountain or this thing. ये फिर से mountain and valley बन गया ना, ridge and valley. But technically, this high thing is called anticline and the low thing is called syncline. So can I say these are anticlines and these are synclines? Can I say synclines are getting deeper? Anticlines are getting weaker. Anticlines को flat करके एकदम नीचे ले आएगा. What is happening? Here degradation is happening. All these sediments are being transported somewhere. It will fill up a lowland. What will be happening over there? Aggradation will be happening. I gave you the example of rivers. Rivers create these V-shaped valleys. हर जगह ऐसा ही होगा? No, if there are resistant horizontal strata, will a waterfall be created? Yes, true. And is it always straight line? No. The mountain may be very, very rigid over here. So the river might turn over here. ऐसे river serpentine path में भी तो आ सकता है ना? Yes or no? So sometimes the mountains are locked like this. Where is the river? River तो सर उसमें ऐसे चल रही है और यहाँ पर दिखती है river. It is hidden. तो वहाँ पे लिखा होगा interlocking spurs.
ऐसा लिखा है, ये डायग्राम बनना चाहिए, वाटरफॉल का डायग्राम बनना चाहिए. एंड व्हेन द रिवर हैज कट द प्लेटू or the mountain, when it comes in the plain में वो क्या करती है, plain में its volume increases and it starts taking this meandering path. तो meander से जुड़े हुए डायग्राम, meander or the middle stage of the river डायग्राम होनी चाहिए. I am talking only of fluvial. In the desert area, rivers are not the main actors. What is the actor? Wind is the actor. Generally, if a mountain was like this, the wind erodes it. It does not erode at the bottom. It erodes somewhere in between. And what are created? Mushroom rocks are created. If you read the book, it will say that generally, because close to the ground, no friction is there, so the wind is not very strong. It is only at this height that the wind is strong. So इधर ज़्यादा काटता है. It cuts here more. Why doesn't it cut up? Well, up the sand is less. Either sand is too much, either it's too heavy, either it is too light. So in between is the best place where wind also has velocity and it is loaded with sand also. What will happen? Abrasion, corrosion, friction, and that is causing it. ऐसे ही वहां पर लिखा होगा यारडंग्स, ज़्यूगन्स, ऐसा लिखा है मशरूम रॉक के अलावा. तो कई जगह वो कहेगा ऐसे वर्टिकल ऐसा बन रहा है. ट्रू और नॉट? हॉरिजॉन्टल बेडेड एंड वर्टिकल बेडेड. तो यारडंग, ज़्यूगन. अच्छा, ये सब अभी जो हम बात कर रहे हैं इरोजन की बात कर रहे हैं. ही विल से सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स आर व्हाट? दे आर नॉट बिकॉज ऑफ इरोजन, दे आर बिकॉज ऑफ डिपोजिशन. रिवर क्या करती है? रिवर अपने ही रास्ते में मटेरियल को डिपॉजिट कर देती है. व्हाट आर दीस कॉल्ड एज? रिवराइन आइलैंड. And the river which has got divided, अब river के branches बन गए ना, this is called braided stream. Is everyone okay? What am I doing today? Today's class was about how Earth's lithosphere was created, what are the forces acting on it, though we will have a talk on endogenetic forces later on when I'm talking about volcano and earthquake, but I want everyone to please in these coming days, can we finish our diagrams on landforms? आपके बुकलेट में अर्थ का इंटीरियर क्या है, all those things are there, mantle core, yes, after that formation of landscape and landforms. ये थोड़ी चीज मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़िएगा. डिग्रेडेशन, पहले वेदरिंग होता है, फिर मास मूवमेंट, इरोजन हैपेंस, बता दिया मैंने. मैन एज एन एजेंट, वो भी बता दिया. मेन एजेंट रिवर भी बताया. यस, फोर्सेस. So every day, whatever I teach, your sheet is introduced to you. The concepts are given to you. Can you go and read it every day? इतना मुझे काम करना होता है, आपको होमवर्क करना होता है. फॉल्ट्स क्या होते हैं? एंडोजेनेटिक फोर्सेस, व्हाट आर दीस? फॉल्ट्स के डायग्राम्स, जॉइंट्स के डायग्राम्स, फोल्ड्स के डायग्राम्स, दैट इज टू बी देयर. So what is line of bluff? According to me, the river flows in interlocking spurs is invisible. It is right. हाँ, तो जो आपको दिख रहे हैं वो ब्लफ्स हैं. रिवर तो नहीं दिख रही है ना, रिवर इज इनविजिबल. ठीक है. बस अर्थ इंटीरियर में सीस्मिक वेव्स का जो डिस्कशन है वो मैं आज नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अर्थक्वेक में करूंगा. बट कैन आई एक्सपेक्ट यू टू नो व्हाट इज इनसाइड द अर्थ, द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर? एलिमेंट्री चीज है, इसको मैं खत्म करना चाह रहा हूँ. एंड योर होमवर्क ऑन ऑल द लैंडफॉर्म्स. अभी तक आई हैव नॉट गॉट वेरी गुड वर्क. आई होप दैट इज व्हाई आई वेंट इन डिटेल, वेंट स्टेप बाय स्टेप. आई होप इट वाज नॉट टफ, एवरीवन वाज एबल टू अंडरस्टैंड. समझ पा रहे हैं? कोई डाउट है? एंड इज इट इंटरेस्टिंग? एंड आई आल्सो टोल्ड यू वेयर यू कैन cross out your books. So everyone, have I done factors controlling landform development today? Have I done endogenetic, exogenetic? Have I done origin and evolution? Today is my second class. These are the basic things which I have done with you. Is everyone okay? Next class is on Monday. There I will be talking about earthquakes. I will be talking about this part, physical condition of Earth's interior. I'll be talking about geomagnetism. Syncline बता दिया, geosyncline की बात करूंगा. That is going to happen along with landforms. Classes are fixed with their designs. What all we have to do, we plan to cover up to this in our 6 lectures. ये 6 lectures के लिए डिजाइन है, बाद के 5 lectures के लिए ये एडवांस है. Is everyone okay? The scheme is told in every class to you. You know what your teacher is going to do. You are pre-advised. You have the handouts also. You have the book also and homework also. Make the max out of it, yeah. And as I said, I'm not out to impress you. I love to be impressed by the results which our students produce, and they have been producing tremendous ones. So happy Holi to you once again in advance. And I have a class in the evening today. I have a class in the evening also in GS. So GS wale log, you can continue there. We are going to talk about vegetation and the land reforms. So Indian geography is going on in GS at 6 p.m. Sunday को I have a class on environment current affairs. I'll keep you posted on the group. अपने आंसर्स को जो भी आप डायग्राम बना रहे हैं, if you really feel that you've done good work, then only post it on the channel. फालतू में सिर्फ अपना गिल्ट हटाने के लिए कुछ भी मत डालिए. And as I said, be smart. Do not overload with content in a diagram book. Diagram book is about well illustrated diagrams, preferably 3 to 4 linked diagrams on a same page. Thank you. Bye bye. Take care. Have a happy, colorful, and safe Holi.